हेलो हेलो हेलो। ओके। ठीक है, चलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हेलो हेलो, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम एवरीवन, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाय एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। कैसे हो आप लोग? हाय एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाय एवरीवन। हे हाय सिमरनजीत, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। What assignment? Actually, this is the assignment I'm talking about. This is an SQL assignment, which has been created for the daily practice. तो डेली प्रैक्टिस SQL असाइनमेंट के लिए आप इस वीडियो में जाओ और इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड द आई मीन टू से द गूगल ड्राइव लिंक। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस और आपको डेटा सेट सब मिल जाएगा, तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे रिलेटेड है, तो मतलब वो बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस सारे लेवल के टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं। सो दैट इज द थिंग।
So, hi everyone, welcome to live stream. So, should we start? Let's start today's session. ठीक है, let's start today's session and let's work on that. But by that time, let's work on some quiz from Power BI. Let's work on some quiz. Quiz question, I mean to say. Okay, this is a quiz from Power BI because we are going to start Power BI का topic, I mean project. That's why I'm saying कि related to Power BI, let's start some knowledge based question, like basic knowledge based, not much because the project is also basic project. That's why. So today's question is, which view is used to build visuals in Power BI? So is it report view, data view, model view, query view? You can answer that, right? So you can answer that question and let's see how many of you give the correct answer. So the question is which view is used to build visuals in Power BI. ठीक है? This is the question. Which view is used to build visuals in Power BI? So is it report view? Is it data view? Is it model view? Or is it query view? ठीक है? So anyone can be the answer. Is it report view? Is it data view? Is it model view? Or is it query view? ठीक? Please participate in this so that we would be able to gain some basic knowledge from Power BI point of view. ठीक है? In that meanwhile, anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts. So, okay, let's start with today's question by that time. So, today's question is, I mean to say, for assignment 7, today's question is, I think we have left
the question from question number 4. ठीक है, let's start from here. Question number 4. ठीक है, let's start from here. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4. ये क्या है? Okay, let's start with question number 4. ठीक. Hey, hi Lucifer, welcome to live stream. Welcome to live stream, and thanks for super chat. And thanks Lucifer for super chat. Like, have you watched the video? Like, how was it? How was it? And the English version will be available on 1st of December. ठीक है, I will मतलब show that thing in the YouTube post, so you would be able to know about it. ठीक है, so I was testing Android 16. Okay, Android 16 कौन सा वर्जन है Android 16? Android 16 June 10, 2025. Codename Baklava. Okay, so is it based on that Dubai वाला दुबई वाला स्वीट, राइट? इज इट दैट? बकलावा शायद दुबई वाला स्वीट है. Android 16. So you are having OnePlus or what? Like, what device you are having that you are using? I mean to say, what device are you using? I mean to say that. हाँ अजय, ओके ओके, तो बकलावा स्वीट मैं एक्चुअली नेट में ही देखा था. ये देखो, एंड्रॉयड 16 बकलावा दुबई स्वीट्स है. ओप्पो ओप्पो या सही है, सही. ओप्पो एंड वीवो आर मेनली फॉर, आई मीन टू से, कैमरा फोन्स. ओप्पो एंड वीवो का कैमरा का जो कंपैरिजन है, आई डोंट थिंक कि हाई एंड. आप अगर एस सीरीज में भी चले जाओगे, एस सीरीज फॉर दैट, क्या बोलते हैं, एस सीरीज ऑफ द सैमसंग, उनका भी कैमरा से सबसे बेस्ट है ओप्पो और वीवो के फोन्स. देन कम्स वन प्लस. सो इट इज लाइक दैट. मतलब ओप्पो वीवो फॉर कैमरा, देर इज नो अदर कंपटीशन. ओप्पो वीवो वन प्लस बेस्ट, मतलब लिटरली बेस्ट. मतलब for the price point, the camera is more than expected, let me tell you, because my cousin brother is using Oppo. What phone पता नहीं अभी. He bought the phone during the sale time. I don't know which series, but he was saying camera was outstanding, literally outstanding. So yours is Oppo Reno 13 Pro 5G. Okay, nice yaar. Nice, nice. That's the best thing. Best thing for camera, bro. No doubt. Best thing for camera. Because actually I can do airdrop to Mac using my Oppo. Airdrop, I think they've started right now, na, for Android. For Android, they've started their own airdrop, I think, which also work with Windows. I don't know about Mac, which also work on Windows. The Android wala airdrop. I don't know what airdrop. Something. Wait, let me check.
एंड आई थिंक क्विक शेयर दे आर यूजिंग एयर ड्रॉइड या सम, क्या एयर ड्रॉइड है कि क्विक शेयर है? एयर ड्रॉइड एंड क्विक शेयर, आई थिंक दिस टू आर द थिंग। आई थिंक दे हैव लॉन्च्ड दिस थिंग, मतलब एयर ड्रॉइड शायद अभी नया लॉन्च किया, आई डोंट रिमेम्बर, बट दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस, मतलब दे हैव स्टार्टेड रोलिंग आउट दिस थिंग, एयर ड्रॉइड, आई थिंक सो। और वो इजी वे है टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम your mobile device to the laptop. So that's the thing. Actually, I can do airdrop to Mac. That's a good one यार, ये अच्छा चीज़ है। एक्सेसिबल होना चाहिए एटलीस्ट फॉर द फाइल ट्रांसफर। ओ यू कैन एक्सेस फोन स्क्रीन फ्रॉम माई, अरे वाह यार, तब तो एक तरीके का पूरा जो मैक और आईफोन का जो था, अभी आईफोन स्क्रीनिंग करके, आई थिंक दिस वन कहाँ गया? एक आईफोन स्क्रीनिंग करके था यहाँ पे कहीं, कुछ मैं देख रहा था यहाँ पे, शायद यहाँ पे भी नहीं है। ये आईफोन मिररिंग दिस वन, ये जो है आईफोन मिररिंग, ये वाला वो काम करता था आपका, जो रिलेटेड टू दिस मैक और आईफोन का मतलब मैक में आईफोन का स्क्रीन शो कर रहा है, बट वो अभी एयर ड्रॉप से भी हो सकता है क्या? दैट्स अ गुड थिंग यार, दैट्स रियली अ गुड थिंग, दैट्स रियली अ गुड थिंग। फोन स्क्रीन ऑन योर मैक कैन ऑल्सो डू। हाँ, अगर फोन स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स अ, अब इसमें क्या रहेगा मालूम सबसे अच्छा? फोन कहीं पे भी रहे, यू कैन नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑन फोन, मतलब अभी डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, बेस्ट चीज़ ये है, डिस्ट्रैक्शन फोन से बंद हो जाएगा, एंड यू कैन डायरेक्टली फोकस, मतलब वॉट एवर नोटिफिकेशन यू विल गेट ऑन फोन यू कैन गेट ऑन मैक एज वेल, ठीक है, तो बेटर रहेगा। तो आप जैसे रहता है ना, फ़ोन पास में रहने से ऑटोमेटिक, जैसे इंस्टा वगैरह, इंस्टा या जो ये रील्स, ये सब जो है रील्स और शॉर्ट्स, ये सब एक पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन था, तो वो अभी बंद हो जाएगा। बिकॉज अब देखो नोटिफिकेशंस तो आ रहे हैं, तो नो वरीज फॉर दैट, कोई भी कॉल या तो आपका जैसे कि मतलब कॉल्स या तो मैसेजेस जो इम्पोर्टेंट है, दैट यू कैन ऑलरेडी गेट इन योर, वट एवर notifications you get on your phone, you can easily transfer this to Mac, और distraction बंद रहेगा, so that's a good thing, that's a good one। and new Oppo Eco is also shifting so smoothly between Mac to my phone, सही है यार, मतलब अभी इकोसिस्टम जो पहले था वो अब सबके साथ हो गया, मतलब जो पहले बोलते थे ना एप्पल इकोसिस्टम था, राइट नाउ बेस्ट थिंग इज इट इज फ्लेक्सिबल टू वर्क with Android as well, so that's a good thing, that's really a good thing, that's a good one, मैं तो बोलूँ, मतलब अभी जितना फ्लेक्सिबल करोगे उतने ही मतलब पीपल विल बी हैप्पी टू यूज द डिवाइसेस, दैट्स रियली गुड थिंग, रियली kind of good development their tech team has thought of and they have done, so that's really a good one, that's really a good one, मैं तो बोलूँ। सही सही।
सो ओके। सो अच्छा लूसीफर, आप देखना, बताना वो वीडियोस, आप देखना जो मेंबर्स ओनली वीडियो था वो देखना, ठीक है, और बताना कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ, नेक्स्ट मेंबर ओनली में मैं प्लान कर रहा हूँ कि फिनेंस वाला कुछ करते हैं, मतलब फिनेंस प्लस हेल्थ केयर वाला कुछ करेंगे, ठीक है। वी कैन वर्क ऑन दैट। फिनेंस प्लस हेल्थ केयर वाला कुछ हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे फॉर द मेंबर्स, मतलब जनवरी प्रोजेक्ट। And as well as I can access my MacBook from my phone also, but it only works with Pixel. You need app Oppo Reno and Find and OnePlus Flex. ओके ओके। तो एक पर्टिकुलर ऐप है, आप बोल रहे हो एक पर्टिकुलर ऐप है जिससे आप मैकबुक को भी एक्सेस कर सकते हो। वाओ, तो कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है, तो दैट्स अ गुड थिंग। सैमसंग में कुछ ऑप्शन है क्या? बिकॉज आई एम यूजिंग सैमसंग एंड आई डोंट थिंक सैमसंग में वो चलेगा, बिकॉज सैमसंग एंड एप्पल आर, बोलते हैं ना 19 का आंकड़ा जो है, मतलब दे आर लाइक राइवलरीज। आई डोंट नो सैमसंग के साथ काम करेगा कि नहीं। एनी ऑप्शन सैमसंग से, अगर आपको आइडिया हो तो, बिकॉज आई यूज सैमसंग डिवाइसेस, इसीलिए अगर सैमसंग में कुछ ऑप्शन है तो इट वुड बी अ बेटर थिंग, मैं तो बोलूँ। अब मुझे जहाँ तक फॉर पिक्सल, बट ओप्पो रियलमी वन प्लस के लिए ऐप की नीड नहीं है। ओके ओके। फॉर पिक्सल, हाँ, यू हैव रिटन इन ब्रैकेट, फॉर पिक्सल यू नीड ऐप, फॉर ओप्पो रियलमी एंड वन प्लस के लिए यू डू नॉट नीड application and all. That is directly gets involved in the ecosystem. Nice one. सैमसंग का पता नहीं, बट एंड्रॉयड 16 में आता है। ओके ओके। सो इट इज एंड्रॉयड का अपडेट फीचर। ओके ओके ओके। एंड्रॉयड ओएस का फीचर है। ओके ओके। मुझे लगा कोई मतलब अलग से, जस्ट नॉर्मल एक, जैसे बोलते हैं ना सिक्योरिटी अपडेट या बग फिक्स जैसे रहता है, सिक्योरिटी अपडेट या बग फिक्स उस टाइप से कुछ आया होगा मुझे लगा। ओ, तो दैट्स रियली अ गुड थिंग देन, मतलब एक बहुत ही काम का अपडेट आया है फ्रॉम एंड्रॉयड, आई वुड से। मतलब ये सब एक्चुअली काम का चीज़ ही है, मतलब फाइल शेयरिंग, फिर फाइल कन्वर्जन, जैसे कि जेपीजे टू दिस दैट, कोई भी फाइल कन्वर्जन फ्रॉम एक फॉर्मेट टू डिफरेंट फॉर्मेट, ये सब एक्चुअली काम का चीज़ है। ज़्यादातर टेक्निकल लोग आर मोस्टली यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, वर्ड टू पीडीएफ जो ऑटोमेटिक हो जाए, वो सब चीज़। तो दैट्स रियली अ गुड थिंग, मतलब दैट्स रियली अ गुड अपडेट, मैं तो बोलूँ, जो आया है अभी। दैट्स अ गुड वन। ये हाय शुभम, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी फ्रॉम लूसीफर। इंडिया में जैन 26 तक आएगा सब फोन के लिए, बस नेम डिफरेंट होगा। फॉर ओप्पो रियलमी इट्स ओ प्लस कनेक्ट। ओके ओके। अभी कुछ ऑक्सीजन ओएस आ रहा है आई थिंक, उसी के साथ ही कुछ अपडेट है क्या? ये जो ऑक्सीजन ओएस कुछ आ रहा है, बहुत बहुत फेमस है ये वाला ऑक्सीजन ओएस, मतलब दे हैव मेड लाइक टॉप नॉच काइंड ऑफ थिंग ऑक्सीजन ओएस, तो दैट्स अ गुड वन। अच्छा है, देखते हैं अगर सैमसंग में आता है।
अब मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल आएगा ही कुछ भी, अगर जैन वाले अपडेट में नहीं है फॉर श्योर इसके नेक्स्ट अपडेट में आएगा ही, बिकॉज वो भी एक एंड्रॉयड कैटेगरी में आता है। सो आएगा, आई थिंक सो। मे बी स्टार्टिंग में ना आए बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बग इश्यूज एंड ऑल, बट सैमसंग में लेट्स प्रे कि आ जाए, बिकॉज मैं सैमसंग यूज़ करता हूँ इसीलिए। ठीक, ओके, तो चलो, बाय दैट टाइम बाय दैट टाइम लेट्स मूव टू, ओके वी हैव वन क्वेरी। ये सभी ऑक्सीजन ओएस एंड कलर ओएस में डिफरेंस में पता नहीं चलता है। अच्छा, कलर ओएस एंड ऑक्सीजन ओएस, ओके ओके। हम्म, अभी ऑक्सीजन ओएस एंड कलर ओएस में डिफरेंट में पता ही नहीं चल रहा। ऑक्सीजन एंड कलर ओएस ऑलमोस्ट यार सारे आपका जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, आई मीन जितने भी कंपनीज है, सब तो चाइना का कोई एक मेजर कंपनी है उसके अंडर ही आता है। तो नाम चेंज होगा, बट एट द एंड देखना सारे सेम फीचर्स यूज़ करेंगे, इतना मैं बता दे रहा हूँ। सेम फीचर्स में आ जाएंगे एट द एंड। सो दैट्स द थिंग। दैट्स अ गुड वन। चलो, कस्टमर्स को अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है सो दैट्स अ गुड थिंग, मैं तो बोलूँ। कस्टमर्स को अगर बेनिफिट मिल रहा है दैट्स रियली गुड थिंग। Okay, we have two queries from Shubham. Bro, we are working on a project uh, that we need to create one dashboard. So we thought, so though we made a blue color theme, ठीक है, but some team dashboard look mind blowing through our dashboard is good. We think we need to learn make professional one should meet the industry standard. Okay, we have one more question. So, bhai, do you have any source from which we can learn designing part? डिज़ाइनिंग पार्ट भाई, डिज़ाइनिंग रिलेटेड एक चीज़ बता रहा हूँ, डिज़ाइनिंग रिलेटेड तो बेस्ट यूट्यूब में ही मिल जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ। लेकिन कौन सा सोर्स है, पर्टिकुलर सोर्स, दैट आई डोंट नो, बट यूट्यूब में मिल जाएगा। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं। इवन दो अब अभी अगर आप मैं बोलूँ तो डेटा विद 12 का नया पावर बीआई का कुछ आने वाला है। मैं कल देख रहा था उसका, कुछ उन्होंने वीडियो लॉन्च किया था। आई थिंक उसमें भी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। यू गो एंड चेक दैट, ठीक है, रिलेटेड टू इट। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। आई थिंक ओप्पो ओन करता है रियलमी वन प्लस, या राइट राइट राइट, ओप्पो। इवन तो आईकू भी शायद वो दे ओन, लाइक ओप्पो, ओप्पो शायद आईकू भी ओन करता है। रियलमी का पता नहीं, वन प्लस तो है ओप्पो का ही, एंड आईकू एंड ऑल ये सब ओन करता है। मतलब सारे एक ही कंपनीज के अंदर ही कवर हो रहे हैं, वही तो। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। भाई यूट्यूब के सारे एवरेज हैं और पुराने लग रहे हैं। यूट्यूब का एक काम करो, और एक काम कर सकते हो, लिंक्डइन में चेक करो। लिंक्डइन में बहुत लोग डैशबोर्ड सबमिट करते हैं, जितना मैं इसमें देखा हूँ लिंक्डइन में बहुत लोग डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं। उनसे कुछ आइडिया ले सको, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा आइडिया, लाइक 100% आइडिया आप एक ही क्रिएटर से ले लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेदर देन डूइंग दिस, आप इस टाइप का यू कैन डू वन थिंग, मतलब 30% फ्रॉम वन क्रिएटर, 30% फ्रॉम अदर, 40% फ्रॉम अदर, लाइक दिस। मतलब इस तरीके से बोल रहा हूँ। मतलब आप जितने क्रिएटर्स हैं, डैशबोर्ड क्रिएटर्स लिंक्डइन में, उनसे कुछ कुछ यू टेक एन आइडिया एंड मेक इट, rather than taking one full idea from a single creator। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ परसेंट आइडियाज आप इधर उधर से लेके यू कैन मेक दिस, ठीक, यू कैन डू दैट। ओके, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ कलर ओएस 16।
It's in beta right now. After 2 weeks, people will get update, but I am not sure. Okay, okay. No, iQOO Vivo own करता है. नो आई अच्छा वीवो भी ओन. ओके ओके ओके. वीवो इज iQOO. iQOO का भी अच्छा फोन्स आ रहा है, मतलब बजट फोन्स में बहुत कुछ. ये लोग स्नैपड्रैगन वगैरह क्या क्या दे रहे हैं, मतलब बहुत हाई फाई फोन्स ये लोग दे रहे हैं. स्नैपड्रैगन एंड ऑल हाई फाई चिपसेट ये लोग दे रहे हैं फोन्स. ये iQOO भी बहुत सही लेवल का फोन्स बनाता है जितना बोलूँ. कैमरा का पता नहीं, बट स्पीड टेस्ट में मैं देखा हूँ iQOO का. मेरा पीजी मेट लिया था, 2022 का बात है, और 2024 तक भी सेम स्पीड था उसका. मतलब वो सेम फ़ोन यूज़ कर रहा था फ्रॉम 22 टू 24. अभी भी शायद यूज़ कर रहा होगा, और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं मिला मेरे को. लेट मी टेल यू दैट. गुड अमाउंट ऑफ स्पीड. शुभम ओके बाय भाई. या भाई अगर कुछ देखो शुभम, कुछ तुम्हारा मेल आईडी तो है शुभम मेरे पास. अगर कुछ मेरे को मिलता है लिंक्डइन में तो मैं लिंक वगैरह भेज दूंगा आपको मेल में. ठीक है, चलेगा शुभम, कोई दिक्कत नहीं है. अगर लिंक्डइन में, मतलब मैं लिंक्डइन अगर स्क्रॉल करता हूँ, अगर मेरे को दिख जाता है कुछ अच्छा वाला प्रोजेक्ट जिसमें कि मतलब रिलेटेड टू डैशबोर्ड अच्छा खासा बनाया हुआ हो, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा. आपका तो मेल आईडी है मेरे पास, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा वो लिंक. उससे आप कुछ सॉरी आइडियाज ले सकते हो. राइट. हाँ भाई प्लीज़. हाँ भाई प्लीज़ प्लीज़, यू डोंट इवन हैव टू आस्क फॉर इट. प्लीज़ सेंड इट बाय एनी मीडिया. हाँ ओ ओके श्योर श्योर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. लाइक लिंक्डइन डीएम और जी. हाँ आप तो लिंक्डइन में भी हो यार, मैं क्यों जीमेल में इतना कर रहा हूँ. आप तो लिंक्डइन में भी मेरे कनेक्शन में हो, तो मैं भेज दूंगा कुछ अगर मिलता है तो. अब वो आप टेस्ट कर लेना कि वो, अगर मतलब आप अगर देख चुके हो उस टाइप के डैशबोर्ड, तो आइडिया नहीं है, बट आई विल सेंड यू सम ऑफ द डैशबोर्ड्स फ्रॉम लिंक्डइन. ठीक. क्योंकि लिंक्डइन में बहुत लोग बनाते रहते हैं प्रोजेक्ट, तो उनसे कुछ अगर आइडिया ले लोगे तो बेटर रहेगा. ठीक है कि नहीं. तो वो, हाँ, आपको मैं लिंक्डइन में भेज दूंगा, क्यों मेल में इतना ये करूँ, डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, बेटर रहेगा. ठीक. सही सही सही. चलो अच्छा है यार, आप लोग प्रोजेक्ट. अच्छा हाँ, और एक चीज़ शुभम, 1 तारीख मतलब बेसिक प्रोजेक्ट रहेगा. 1 तारीख मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है फॉर एवरीवन ऑन पावर बीआई. तो वो एक बार चेक कर, मतलब उसमें डैशबोर्ड वगैरह नहीं है. सिंपल मैंने बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स यूज़ किया. इवन दो मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा वाला चीज़ भी नहीं किया, बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स यूज़ किया है, मैप्स यूज़ किया है एंड ऑल. तो वो एक बार आप देख लेना. डैशबोर्ड मतलब ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बहुत डैशबोर्ड वगैरह कुछ बनाया हूँ, ऐसा नहीं है. डैशबोर्ड वगैरह नहीं है, बेसिक प्रोजेक्ट है. तो इसीलिए बोल रहा हूँ शुभम, क्या है कि आपको अगर कुछ नियर फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि डेटा सेट रहेगा उसमें. हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है इवन दो, तो डेटा सेट आप यूज़ कर सकते हो एडिशनल, अपना कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए. ठीक है ना. और हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है, तो आप देखना बताना कैसे लगा एंड ऑल. ठीक. Okay, we have one more query. I am in a journey to achieve 500 plus connection. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये हमारे एमबीए कॉलेज में भी बोला गया था. 500 प्लस कनेक्शन रहने से एक अच्छा इंप्रेशन शो करता है. दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड थिंग यू आर डूइंग. In that manner, I am just sending connection link to random person that suggest me इन लिंक्डइन. इज इट ओके? देखो दैट इज ऑल्सो ओके, जो आपको सजेस्ट करता है, क्योंकि लिंक्डइन आपको वही सजेस्ट करता है जो प्रोजेक्ट आप बनाते हो, या जिनको आप सर्च करते हो, या जिनके पोस्ट आप लाइक करते हो. अगर कोई डेटा एनालिस्ट है तो उनका ज़्यादातर सजेशन देगा, या तो कोई वेब डेवलपर है तो उनका. मैं रिकमेंड करूंगा, एक चीज वो कर रहे हो दैट्स अ गुड थिंग, नो वरीज फॉर दैट, वो आप कर सकते हो. मैं रिकमेंड करूंगा जितने एचआरस है ना, कंपनी के एचआरस हैं, कोई भी एचआर, एनी एचआर, मतलब एचआर बीपी हो कि रिक्रूटर हो,
उन लोग को सेंड करो। क्यों पता है क्यों शुभम? इसलिए बोल रहा हूँ टू एवरीवन इन द लाइव स्ट्रीम, आई एम सेइंग दिस ऑल्सो। क्या रहता है कि जो रिक्रूटर है तो एचआर होते हैं ना, वो लोग पोस्ट करते रहते हैं रिलेटेड टू वैकेंसीज, ठीक है? या तो एक काम करो शुभम, आप मेरे प्रोफाइल में जाओ, जितने भी रिक्रूटर्स या एचआर है ना वो सर्च करो और उनको ही सेंड कर दो। क्या रहेगा प्रॉफिट? वो दिखाएगा कि मैं म्यूचुअल कनेक्शन हूँ तुम्हारे और उसके बीच में, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करे, ठीक है? वो एक आइडिया है, वो आप कर सकते हो। ये मेरे एमबीए में बताया गया था, एमबीए कॉलेज में अपने को सिखाया गया था। एक तो एचआर और रिक्रूटर्स को भेजो, दूसरी बात ये है कि आप मेरे प्रोफाइल में जाओ, मेरे जितने एचआर और रिक्रूटर्स हैं उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दो, ठीक है? बेनिफिट क्या है कि मैं म्यूचुअल कनेक्शन दिखाऊंगा उनको, और म्यूचुअल कनेक्शन से क्या एक भरोसा रह जाता है कि ये बंदे का ये है, मतलब म्यूचुअल कनेक्शन है, तो इनका भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है एक्सेप्ट करने का। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्ट करेगा, चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि आप रैंडम सेंड करोगे, देखो कोई म्यूचुअल कनेक्शन नहीं है तो वो एक अलग लगता है। तो आप मेरे प्रोफाइल में जाओ, जितने एचआरस और ये हैं जो क्या बोलते हैं रिक्रूटर्स हैं, उनको आप भेजो, ठीक है? बेनिफिट क्या रहेगा, उनके जितने भी पोस्ट वगैरह आएंगे ना, आपको मालूम चल जाएगा वैकेंसी का, और आप साइड बाय साइड आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा, मेरे बोलने का मतलब है। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। अभी मेरे को यूट्यूब की ज़्यादा यूज़ नहीं लग रहा है ड्यू टू एआई फीचर, ओप्पो हैव ए सोन एआई फीचर, बट यूजिंग दैट एआई फीचर आई कैन ऑल्सो यूज देयर रिस्पॉन्सेस टू जेमिनाई। सही है यार, मतलब एआई टू एआई आप यूज़ कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। एंड बेस्ट पार्ट इज यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ एआई, प्लस आपने शायद जेमिनी और किसका परप्लेक्सिटी का आपने कुछ सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, बिकॉज कॉलेज सब्सक्रिप्शन कुछ होता है, तो यूज़ इट, अच्छा चीज़ है। मतलब बोलते हैं ना, पूरा उसको रगड़ दो, यूज़ करो एकदम, क्योंकि जेमिनाई शायद अच्छा, मैं जितना सुना हूँ जेमिनाई शायद अच्छा है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब अच्छे एआई टूल्स हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एलएलएम्स हैं। यूज़ इट, यूज़ इट, मैं तो बोल रहा हूँ यूज़ इट, सिंपल, रगड़ दो उसको, कि फ्री में मिला है, रगड़ दो उसको पूरा, बेनिफिट जितना हो सके यूज़ करो, वो बोल रहा हूँ। ओके भाई, मैं ज़रूर फॉलो करूंगा आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट। अपकमिंग प्रोजेक्ट थोड़ा बेसिक रहेगा, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, वो डेटा सेट लेके ना आपका जितना नॉलेज है वो आप ऐड करते रहो, ठीक है? क्योंकि वो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, तो आप अपने हिसाब से जितना भी क्वेश्चन साइड से डाल सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बेसिक्स प्रोजेक्ट है और आपको आइडिया है पावर बीआई का, तो आपको मे भी शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ रेदर देन गेटिंग बोर्ड, वो डेटा सेट आप डाउनलोड करो और अपना कुछ ऐड करते रहो, बहुत सारा चीज़ ऐड करो, डैशबोर्ड वगैरह, मतलब बोलते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड, वो करते रहो, यू माइट गेट अ गुड अमाउंट ऑफ और क्वालिटी आउटपुट फ्रॉम दैट, ठीक है? क्योंकि आपका आइडिया है, आपका नॉलेज भी है, पावर भी है, इसीलिए। उसमें मैंने डैक्स भी यूज़ नहीं किया, लेट मी टेल एवरीवन। हाँ, डैक्स मैंने मेंबर्स वाला वीडियो में यूज़ किया, जो मेंबर्स ओनली वीडियो है। तो मेंबर्स ओनली वीडियो, मतलब जो मेंबर्स ओनली अपने व्यूअर्स हैं, तो उनको तो डबल बेनिफिट रहेगा, डैक्स का भी मिल जाएगा, और जो एवरीवन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट फॉर एवरीवन, उसमें भी बेनिफिट मिल जाएगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। हाँ ओके भाई, मैं ज़रूर, बेसिकली ओप्पो ओप्पो यूजिंग जेमिनाई एआई, ओके ओके, दैट्स अ गुड वन, गुड वन, गुड वन। और और किसी को कुछ, किसी को कुछ डाउट? ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी फ्रॉम लूसिया, व्हाट काइंड ऑफ
नॉलेज डू आई नीड टू मैनेज क्लाउड सर्विस सर्वर? क्लाउड सर्विस के लिए जितना मैं डीए बेसिस पे बोल रहा हूँ, डेटा एनालिसिस बेसिस पे, ए डब्ल्यू एस, ग्लू, एज्योर, ये सब है। एज्योर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये सब है क्लाउड सर्विस के लिए, मतलब डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ए डब्ल्यू एस, ग्लू, मतलब ए डब्ल्यू एस, ग्लू एक ही है, और एज्योर ये वाला चीज़। दूसरा चीज़ शायद आपको आई थिंक डॉकर करके एक है, वेब वेब सर्विस, वो एक चीज़ शायद देखना पड़ेगा। जितना मुझे आइडिया, मैं डॉकर के बारे में देख रहा था, इवन तो मुझे लाइव स्ट्रीम में भी आई थिंक समवन टोल्ड मी रिलेटेड टू डॉकर, तो मैंने थोड़ा देखी किया था डॉकर के बारे में। सो डॉकर इज इनटू ऑटोमेशन काइंड ऑफ थिंग इन क्लाउड सर्विस, तो वो देख लेना। और बाकी आप एक बार शायद क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे थे, तो वो आई डोंट नो वो ऐड होता है कि नहीं क्लाउड सर्विस में, बट एज पर कॉमन सेंस जितना मैं बोल सकता हूँ, क्लाउड सिक्योरिटी शायद यूज होता होगा, सो यू माइट use that as well. But data analysis point of view में AWS, Azure, they are useful in cloud service and servers, because I have used that in my work experience, इसीलिए। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी फ्रॉम शॉन। भाई मैं अभी उतना रेडी नहीं हुआ हूँ अभी, एटलीस्ट आई थिंक अभी का डीए जॉब्स क्राइटेरिया सर मैच करने वाला, मेरा स्किल्स नहीं मैच हो रहा है। अरे स्किल्स विल्स, स्किल्स देखो जितना है उतने में ही अप्लाई करते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, अप्लाई करने में क्या है? थोड़ी वी आर पेइंग समथिंग ना, वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर एप्लीकेशन। अप्लाई करते रहो, अगर उनका प्रोफाइल, मतलब अगर उनको तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा लगा, सो दे माइट गिव यू अ कॉल, है कि नहीं? अप्लाई करते रहो, मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट तीर मारते रहो एम में। लग गया तो अच्छा बात है, नहीं लगा कोई बात नहीं, जस्ट ट्राई, कंसिस्टेंट रहो, अप्लाई करते रहो, सिंपल। पहले मैं भी ऐसा था, ज्यादा सोचता था कि क्या होगा, कॉल आएगा नहीं आएगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स, वो सब नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग है शुभम, लेट मी टेल यू, दैट इज ओवर थिंकिंग। उतना नहीं सोचना है, जस्ट अप्लाई करते रहो, जो होगा देखेंगे, दैट्स, वो ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा देखेंगे। आप अप्लाई करते रहो, क्या पता उनको आपका स्किल्स मैच हो जाए, जितना भी स्किल्स आपको आता हो। सो दैट्स द थिंग। अभी मैं सीक्वल मास्टर कर रहा हूँ, डेटा लेमर और हैकर रैंक पे कोड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दैट्स अ गुड वन यार, डेटा लेमर तो अच्छा है, हैकर रैंक अच्छा है, आई थिंक थोड़ा हाई लेवल है, बट डेटा लेमर इज गुड वन। एटलीस्ट आपको यूआई बेसिस पे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। यस आई हैव, फ्रॉम लूसीफर वी हैव वन मैसेज, आई हैव जेमिनाई प्रो 2 years परप्ले, हाँ आपने बोला था शायद जेमिनाई प्रो का 2 साल का, बाबा। परप्लेक्सिटी 1 year, हाँ चैट जीपीटी तो अपना सब 1 year है, चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी आई थिंक सब 1 1 year का है। चैट जीपीटी का शायद अभी आया है चैट जीपीटी गो या समथिंग 5.1 वाला सीरीज, वो तो अब मैंने भी वो ले लिया, आई थिंक सबने लिया होगा। परप्लेक्सिटी तो अपना इसके, और जेमिनाई का और एक चीज़ है, शायद जियो यूजर्स को जेमिनाई मिल रहा है, आई थिंक सो। लूसीफर ये एक बार चेक करना, मैं 2 हफ्ते पहले देख रहा था, आई थिंक जो जियो यूजर्स है उनके लिए जो जेमिनाई है वो भी शायद दे रहा है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। जियो यूजर्स ऐसा कुछ है, वो एक बार आप चेक कर लेना। और भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक पोस्ट किया डीए सर्टिफिकेट का, उसमें एक लाइक कमेंट, हाँ ठीक है, आप पोस्ट मेरे को भेज देना, डीएम कर देना मेरे को लिंक्डइन में, मैं कर दूंगा पोस्ट, ठीक है? मैं लाइक या कमेंट कुछ कर दूंगा। रीच में भी शायद उतना ना है, क्योंकि मैं थोड़ा कम ही यूज करता हूँ लिंक्डइन, बट एनीवेज मैं लाइक और कमेंट कर दूंगा उस पर, आप ठीक, आप मेरे को डीएम कर दो लिंक्डइन में, आई विल डू इट। भाई मैं अभी रिसेंटली चेक कर रहा हूँ लिंक्डइन पे, जॉब्स में स्किल रिक्वायर्ड फिर उसमें सीक्वल, पावर, एक्सेल वगैरह तो यूज साथ बहुत कुछ नीड्स है, लाइक जीसीपी ऑटोमेशन, जीसीपी ऑटोमेशन, जीसीपी तो इसका है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है जीसीपी, जीसीपी तो क्लाउड प्लेटफॉर्म है। उतना भाई नो नीड टू वरी, जस्ट अप्लाई, अगर इतना सब पूछ रहा है तो वो शायद एक्सपीरियंस वाले का होगा, 2 साल 3 साल का, उतना नहीं है। नॉर्मल अप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है? जस्ट अप्लाई, कोई आपको थोड़ी ब्लैक लिस्ट करेगा वो, अप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? पाइपलाइन बिल्डिंग, डोंट वरी, जस्ट अप्लाई। क्लाउड बैकएंड का पढ़ रहा हूँ अभी, एमसीए में ऑनलाइन कर रहा हूँ,
पर गोल इज पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस। दैट्स अ गुड वन यार, दैट्स अ गुड वन। मतलब कंप्यूटर साइंस में इतना इंटरेस्ट है, मैं तो बोल रहा हूँ लूसीफर, जस्ट वन सजेशन फ्रॉम माय साइड कि जस्ट वन सजेशन, अभी पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो एक यूट्यूब चैनल तो है आपके पास, फेसलेस वीडियो कुछ बना के आप डाल सकते हो क्या, टॉपिक रिलेटेड, पढ़ाने रिलेटेड। जस्ट एक सजेशन फ्रॉम माय साइड। ऐसा नहीं कि आपको रेगुलर होना है लूसीफर, जस्ट हफ्ते में एक दो वीडियो डाल दो। क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहेगा और एक वीडियो भी अपलोड होता रहेगा, तो किसी को अच्छा लगा तो दे माइट गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो। ठीक है, क्योंकि अभी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ के अगर समझाओगे किसी को, मतलब नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस कि हर दिन वीडियो डालना है, हफ्ते में एक दो वीडियो डाल दोगे, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दो, क्योंकि अभी पढ़ाई का स्टेज है और कंप्यूटर साइंस में अभी थोड़ा है, बूम है कि हाँ चलो करना है करके कुछ। तो अगर आप नॉलेज, मतलब फेसलेस आपके ऊपर है, अगर आप कंफर्टेबल हो फेस दिखाने में, इट्स योर विश। अगर नहीं तो भी चलेगा, एटलीस्ट आप जैसे ये एक्सकेली ड्रॉ है जैसे मैं शो कर रहा हूँ, इस पे आप नोट्स बना सकते हो, या तो एनीथिंग यू कैन क्रिएट नोट्स, या तो स्क्रीन शेयर करके आप शोकेस कर सकते हो, पढ़ा सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में। इट विल बी अ गुड थिंग, मैं तो बोल रहा हूँ, आपका भी रिवाइज हो जाएगा एंड बाकी और किसी को बेनिफिट मिल रहा है, सो दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट। जस्ट सेइंग, डिपेंड ऑन योर टाइम, और इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना है, हफ्ते में एक दो वीडियो कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक आप पढ़े हो वो पढ़ो और समझाओ, तो आपके ब्रेन में भी अच्छे 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 से छप जाएगा, प्लस सामने वाले को बेनिफिट हो गया, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, आप बस मुझे कुछ ऐसे सिनेरियो के हिसाब से जिस पे मैं फोकस कर सकूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल, आप बस मुझे कुछ अभी के सिनेरियो के हिसाब से जिसमें मैं फोकस कर सकूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल नीड्स हो। ओके ओके, मतलब किस चीज़ पे, किस सिनेरियो बेस पे, मतलब किस टॉपिक पे हो, आप बोलो मैं हेल्प कर दूँगा। वहीं से उठाया, 1 ईयर 2 ईयर्स हो गया, ओके ओके ओके, 1 ईयर का 2, ओके ओके, जियो का, हाँ भाई भेज दिया आपको मेरा सर्टिफिकेट, ओके मैं ओपन करके देखता हूँ, ठीक, नो वरीज फॉर दैट, नो वरीज फॉर दैट। हाँ हाँ, डाल सकता हूँ, बस थोड़ा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यू कैन डू इट यार, बिल्कुल आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम है एंड यू कैन इजीली यूज दैट टाइम टू टीच। ठीक है, ठीक। हाय सिमरनजीत, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाँ, व्हाट अबाउट डीई, इज इट फॉर फ्रेशर? डेटा इंजीनियरिंग ना, डेटा इंजीनियरिंग इज मेनली बेस्ड ऑन क्लाउड सर्विस, ठीक है, क्लाउड सर्विस रिलेटेड जितना भी है वो सब डेटा इंजीनियरिंग में यूज होता है, जैसे स्नोफ्लेक्स वगैरह, ये सब यूज होता है, बिग डेटा टाइप ऑफ काइंड ऑफ थिंग। बाकी आपका सीक्वल पाइथन तो इसमें भी यूज रहेगा, और मतलब फ्रेशर के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो, अगर उनका देखो स्नोफ्लेक्स में जैसे क्या होता है, सीक्वल का अगर आपको नॉलेज है तो स्नोफ्लेक्स आप इजीली कर लोगे। तो एनी हाउ अगर कोई फ्रेशर है और उसका सीक्वल पाइथन का नॉलेज स्ट्रांग है, और उसको इजीली समझ में आता है कि जो ईटीएल है, ईटीएल एंड ईएलटी, जो पाइपलाइंस होता है, वो सब चीज़ में उसको समझ है, तो दे कैन इजीली मूव टू डेटा इंजीनियरिंग, ठीक, दैट्स द थिंग। और बाकी क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बोला है, तो ए डब्ल्यू एस, ग्लू, एज्योर, ये सब का थोड़ा मोड़ा नॉलेज आप रख लेना, बेसिक नॉलेज, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। इजीली डेटा इंजीनियरिंग में यू कैन हैव सम, क्या बोलता हूँ, प्रोग्रेस इन दैट। और फ्रेशर्स के लिए तो भाई ऑब्वियसली स्टार्टअप कंपनीज आर देयर टू टेक केयर ऑफ, स्टार्टअप कंपनीज, मेनली स्टार्टअप कंपनीज ये सब क्लाइंट्स हायर करते हैं, जैसे क्लाइंट्स रिलेटेड टू एमएनसीज, और उनके लिए डेटा रिलेटेड वर्क करते हैं, सो एनी हाउ स्टार्टअप कंपनीज तो फ्रेशर्स हायर करते हैं, सो यू कैन गो इन दैट, ठीक, दैट्स द थिंग।
right? Anybody have any doubt in the live stream? Anybody have any doubt in the live stream? Let me check. Let me just refresh it. देखते हैं कुछ अगर आया हो तो. Okay. Hey, hi Keshav. Welcome to live stream. Oh, sorry. Welcome to live stream. We have one query from Keshav. Hi brother, how is Databricks in term of project? Freelance की वेबसाइट बना दो. Databricks रिलेटेड टू मतलब बिग डेटा प्रोसेसिंग के काम आता है Databricks, इतना बता दे रहा हूँ. जो Databricks है इट इज रिलेटेड टू बिग डेटा. ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग के काम आता है. ठीक है, ज़्यादातर इसमें भी वही ETL का यूज़ ज़्यादा रहता है. ETL मतलब वही पाइपलाइंस, नथिंग एल्स. पाइपलाइंस में ज़्यादा काम आता है ये सब डेटा इंजीनियरिंग में, जो डेटाब्रिक्स आप बोल रहे हो. तो प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे, दैट्स अ गुड थिंग. लेट मी टेल यू, दैट्स रियली अ गुड थिंग. आई थिंक डेटाब्रिक्स को ज़्यादातर आप लोग स्पार्क, डेटाब्रिक्स अगर यूज़ करो तो स्पार्क भी यूज़ कर सकते हो. स्पार्क और क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है, यू कैन यूज़ दैट इन योर प्रोजेक्ट एंड दैट्स अ गुड वन. मैं तो बोल रहा हूँ यू कैन यूज़ दिस, मतलब गुड टू गो. मैं तो बोल रहा हूँ यू कैन यूज़ इट. और बाकी फ्रीलांस का कोई वेबसाइट, फ्रीलांस का वेबसाइट तो है अपना fiverr.com ना fiverr.com कुछ एक है, समथिंग लाइक दैट. और बाकी क्या क्या है इसमें, नोट लाइक दिस. बाकी अपवर्क है. अभी के लिए तो यही दोनों मेरे को पता है. तो ये दोनों में आप एक बार ट्राई करो, अपना अकाउंट आईडी बनाओ, स्किल्स वगैरह लिखो. और बाकी रेडिट वगैरह में भी आप चेक कर सकते हो. रेडिट लिंक्डइन में भी आते हैं पोस्ट related to this freelance work, तो you can go and check there as well. ठीक है, you can go and check there as well, तो बेटर रहेगा. ठीक. ओके. हाय मितेश, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. वेलकम टू live stream Mitesh. Welcome to live stream. So we have one query from Mitesh. uh, Hello sir, I am a new to DA. I just started on DA. Is it a good field for 20? Yes भाई, DA is good field, let me tell you. 2026 के लिए गुड फील्ड है. और बाकी ग्रोइंग है. इट्स अ ग्रोइंग काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल्स इन 2025 एज वेल. 2025 में भी था दिस थिंग्स, डेटा रिलेटेड वर्क, any data related work. It is a good thing, you can go with that, no worries for it. ठीक. And we have one more thing. Is Python necessary? Yes, Python is necessary. Python not full. Python से क्या होता है, let me tell you one thing. From Python you can learn lot of things, जैसे कि आपका वेब डेव हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न. बट पाइथन का आपका सिर्फ डेटा रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ना है. डेटा रिलेटेड टॉपिक्स मतलब उसमें जो जो लाइब्रेरीज यूज हो रहा है वो सब पढ़ना है. एग्जाम्पल जैसे आप जानते हो पैंडास, नमपाई, ये सब. नॉट ऑल, मतलब ये सब आपको नहीं पढ़ना है इसमें. ठीक है, ओनली डेटा रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पाइथन में, जस्ट यू हैव टू नो अबाउट इट. ठीक है. तो आई वुड से इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू लर्न SQL and Python if you are moving to any of the data field. any मतलब
डेटा एनालिस्ट, या तो डेटा इंजीनियरिंग, या तो डेटा साइंस, you can move to that. मतलब if you want to move to any of the field, you can go in that. And let me tell you one thing, we have projects as well for SQL and Python. You can go and check that out. ठीक, you can go and check that out. It would be better, like you would be able to know what's the use of Python in real world kind of scenario in projects. ठीक है, you can go and check that. I have all the projects here with the link, and also you can use the project in your CV and resume properly. You can use the project also in your LinkedIn platform. ठीक है, you can go and see that, because whatever projects I have made in data analyst point of view, and it is in freelance point of view, like how a freelance client say you related to their requirement, how you do the data cleaning work, मतलब all the thing, जैसे कि data cleaning work, how you do it, then data modification, how you do it, then data manipulation also, everything. Then full workflow is there, मतलब पूरा workflow is there in this project. Even though giving a placeholder for null values, even though changing data types, each and everything is there in the project for Python as well as SQL as well as Excel, and all the data sets and study material are available in the description box of this project, so you can go and watch that. Plus you can use those data sets for your own project as well, so no worries for that. Take, you can use it. And even though on 1st December we are also starting our Power BI project, so you can go and watch that on 1st December. ठीक, ओके, वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम लूसिया। चलो बाय, मैं कुछ दिनों में फ्री होते आपका प्रोजेक्ट देख के अपलोड कर दूंगा। श्योर भाई, श्योर, थैंक्स भाई, श्योर, थैंक्स फॉर दैट। और 1 तारीख को इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा उसका, 1 दिसंबर को। नो वरीज फॉर दैट, अभी तो हिंदी वर्जन अपलोड हुआ है, इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा। ठीक है, नो वरीज फॉर इट। गो एंड चेक दैट आउट। Okay, we have one more query. I sent some demo video about ecosystem on your mail. Okay, let me check. एक मिनट। I have sent some demo video about ecosystem on your mail. आया नहीं है भाई मेल, मेल आया नहीं है। एक बार आप चेक करो प्रॉपर है कि नहीं, मतलब मेल तो आया नहीं है। आई हैव नॉट रिसीव्ड द मेल, चेक वंस। ठीक, we have one more query. What about DSA? Python is needed for DSA. No DSA, frankly speaking, in my experience, in both, not only freelance experience, in both in corporate as well as freelance, I have not used DSA in Python. I have used whatever functions are there in libraries. I have only used that. ठीक है, frankly speaking, I have only used that. No other DSA kind of thing, no loops, nothing. Let me tell you. So DSA is not that important. Let me tell you that. मतलब even हाँ, but if you want to learn very basics, मतलब very basic amount of DSA if you are learning in Python, it is good to go. If you don't, no worries for that. ओके, इंग्लिश का आते ही नोटिफाई कर दो। हाँ, 1 दिसंबर को मैं ये कर दूंगा आपको, नोटिफाई कर दूंगा। 1 दिसंबर मेनली 10 AM, मेनली 10 AM को आई विल पब्लिक, मतलब देखो 10 बजे तो नॉर्मल वाला वीडियोस भी आ जाएगा, प्लस जो मेंबर्स वीडियो है वो भी 10 बजे ही मैं लॉन्च कर दूंगा, या बोलोगे तो उससे जल्दी भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
ठीक, नो वरीज फॉर दैट। आई विल नोटिफाई यू, मेल कर दूंगा। ठीक है, यू कैन डू दैट। ठीक। शुभम भाई, आप मुझे कुछ बोल रहे थे क्या? लाइक मैं कॉल पे था इसलिए मैं मिस कर गया ना। बोल नहीं रहा था, मैं बोल रहा था लिंक्डइन में आपने बोला था ना भेज दिया हूँ, वो मैं लिंक्डइन ओपन करके आई विल चेक दैट। ठीक, आई विल चेक दैट। लूसीफर, एंड आपने ऐसा बोला यूट्यूब में आऊँगा, गेमिंग कोडिंग के वीडियोस डालूंगा। हाँ भाई बिल्कुल, यू कैन डू दैट। अभी क्या है, अभी आप पढ़ाई का टाइम है, तो यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट योर टीचिंग करियर देयर विदाउट फेसलेस वीडियो, मतलब बोलो बिना फेस वाला वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो डालने में क्या है, जस्ट मेक अ वीडियो एंड upload it। ठीक, face your wish, if you want to put faceless, if you want to put face वाला वीडियो यू कैन यूज इट। बहुत सारे फीचर्स भी अपना एक्सकैरी ड्रॉ वगैरह में आप समझा सकते हो, एक्सेल वगैरह ओपन करके यू कैन इजीली इजीली टीच एनीवन, क्योंकि अभी आपका लर्निंग स्टेज है, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। और गेमिंग का भी ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज़ लूसीफर, आई हैव नॉट रिसीव्ड योर मेल, तो एक बार आप चेक कर लो। आप सही मेल में भेजोगे, मतलब आपका मेल शो नहीं कर रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। Okay, can you please repeat that? What are the skills in DA current scenario focus to have on job rather than carried away extra? अभी के लिए फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ, सिंपल फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ। अभी के लिए जितना है सीक्वल, पाइथन, इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर फुल नॉलेज होना चाहिए इन दोनों टूल्स का। और अगर आपके पास कुछ, जैसे आपके पास अभी बीआई का नॉलेज है, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। ठीक, दैट इज रियली अ प्लस पॉइंट। तो अगर बीआई का नॉलेज है, दैट्स रियली अ प्लस पॉइंट। बट ये दोनों चीज मैंडेटरी है, यू कैन नॉट मिस दैट। यू कैन नॉट मिस दैट, यू हैव टू बी very much flexible and acquainted with this tools, python plus sql। बीआई का नॉलेज है, दैट्स अ गुड थिंग, वो एक प्लस पॉइंट देगा। सो दिस थ्री थिंग्स आर गुड एनफ टू अप्लाई, टू मतलब जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो, आई मीन टू से डीए के लिए और बीआई डेवलपर्स के लिए, ये दोनों जो वैकेंसीज हैं इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एटलीस्ट बीआई का नॉलेज है और बाकी सीक्वल पाइथन तो है ही, तो डीए के लिए यू कैन गो फॉर दैट। ठीक, इतना आप प्रॉपर कर लो भाई, बहुत है, बहुत एनफ है। लेट मी टेल यू दैट इट इज मोर देन एनफ, मोर देन एनफ भाई, इतना बता रहा हूँ। ओके यश, कुछ टीचिंग प्लस फन ऐसा चाहिए, वरना ओनली टीचिंग इज बोरिंग। और मेल आ जाएगा वो वीडियो क्लाउड पे अपलोड भेज रहा हूँ। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। हाँ बिल्कुल, आप अपने देखो, आपका यूट्यूब चैनल है, योर विश, आप कुछ भी डालो, बट एटलीस्ट स्टार्ट अपलोडिंग, मैं तो बोल रहा हूँ स्टार्ट अपलोडिंग। ठीक है, टीचिंग प्लस गेमिंग यू कैन मिक्स इट, आराम से कर सको, बट स्टार्ट अपलोडिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा रहेगा, अभी सही टाइम है। आई मीन टू से इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट, और आपका भी रिवाइज होता रहेगा, सो दैट्स अ गुड थिंग। आ गया क्या? हाँ, अभी अभी जस्ट आया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग 25/11/26 at 7:53। या आ गया आ गया आ गया। आई जस्ट रिसीव्ड योर मेल, जस्ट रिसीव्ड योर मेल। आई हैव सेंड यू अ मेल फॉर दैट, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। भाई पाइथन में पैंडास नंपाई मैटप्लॉटलिब कर लिया हूँ, सीबोन करने वाला हूँ, सफिशिएंट शुड आई लर्न ना? दैट्स गुड टू गो, गुड टू गो। पैंडास नंपाई तो मेन है, वो आप कर लियो, दैट्स अ गुड थिंग। बाकी मैटप्लॉटलिब, इट्स अ गुड वन फॉर विजुअलाइजेशन, यू नो दैट। हालांकि आपको पावर भी आता है, बट ठीक है, इसका भी नॉलेज इज अ गुड वन। बट ये दोनों का तो मेन नॉलेज रहेगा, मैंडेटरी। और इसको तो बोल रहा हूँ रिकमेंडेड है, यू शुड लर्न, बिकॉज इसके बिना तो और है नहीं डीए। मतलब पैंडास नंपाई नहीं है तो डेटा एनालिसिस आई डोंट थिंक कोई यूज़ है।
मैटप्लॉटलिब चलो बीआई आता है, यू कैन कवर अप दैट थिंग, बट दिस थिंग्स ब्रेड एंड बटर है भाई। सी बॉन करने वालों सही है, करो यार, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, यू कैन गो विद दैट। फ्रेशर्स के लिए इट इज मोर देन एनफ भाई, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए इट्स मोर देन एनफ, सो नो नीड टू वरी अबाउट, ठीक, नो नीड टू वरी अबाउट। आप इजीली स्टार्ट करो, अप्लाई करते रहो भाई, ठीक है। और ज़्यादा सोचने का नहीं है, ज़्यादा नो ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग से क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है भाई। तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, सिंपल जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग एंड कंटिन्यू, कंटिन्यूस लर्निंग करते रहो, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखो भाई, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखो और कुछ नहीं चाहिए, हो जाएगा काम, ठीक, हो जाएगा, ठीक, नो नीड टू वरी अबाउट, कंसिस्टेंसी अपना बनाए रखो बस। भाई स्क्रैपिंग सीख लूँ, स्क्रैपिंग, देखो वेब स्क्रैपिंग रिलेटेड, अगर पहले बात, अगर अपना ये बेसिक्स वगैरह आप कवर कर लियो, देन यू आर गुड टू गो, यू कैन लर्न एनीथिंग। बट ये सारे पहले आप स्ट्रॉन्ग करो, ये दोनों टूल्स आप हैवीली स्ट्रॉन्ग करो। वेब स्क्रैपिंग वगैरह ठीक है, अच्छा बात है, बट आप पहले ये दोनों टूल्स कवर अप करो। फ्री टाइम मिल रहा है, लर्न स्क्रैपिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर करो कि इस सब में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, आप प्रॉपर यू शुड हैव आंसर फॉर दैट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं पाइथन का भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दूंगा 2000 सब्सक्राइबर में। क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ बनाना फॉर पाइथन, सो वी विल बी डूइंग पाइथन का क्वेश्चंस एज वेल आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर, तो हो जाएगा वो भी, वी विल डू दैट। Okay, we have one more query. After doing basics of Python like loops and conditional statement, should I start solving problem like prime numbers and star pattern etc. or should I start with libraries? Basics knowledge अगर ले लोगे तो कोई no issue for that. Good for you only, Mitesh. So if you have, or if you are taking basic knowledge for whatever you have learned for loops, functions and all like this, तो ठीक है, it's good to go. It is better to understand the logic, and you would also be having a hands-on practice on those logic, ठीक है। Side by side start with libraries, side by side start with libraries, ठीक है, side by side start with that, ठीक। To understand logic better, yes, yes, correct, that's what I told, correct, correct, correct। शुभ, ओके भाई, थैंक यू फॉर गिविंग वैल्यूएबल इनसाइट, गोइंग फॉर सीक्वल प्रैक्टिस, गुड नाइट। हाँ भाई चलो, गुड नाइट भाई, प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा, नो ओवर थिंकिंग, नथिंग, ओवर थिंकिंग से दूर रहो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा, ठीक। सो जस्ट चिल। मितेश थैंक यू, या वेलकम ब्रदर, वेलकम भाई, वेलकम। सो शुड वी स्टार्ट?
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन में? राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, points and cashier ID of the employee with the highest point under each cashier. Okay, okay, ठीक है। That means in this question we have cashier IDs. Let me show you this things here. अच्छा, यहाँ से मैं टेबल ले लेता हूँ पहले। हम्म, हम्म, तो यहाँ से किस टेबल में है? फीडबैक टेबल। लेट्स ठीक, अब इसमें से चेक करते हैं कि है क्या, एक्चुअली सिनेरियो क्या है, इसमें क्या चीज़ है। लेट्स सी दैट। इसमें क्या है, हर कैशियर आईडी का कुछ कैशियर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, हर कैशियर आईडी का कुछ कैशियर पॉइंट्स दिया हुआ है। मतलब जैसे कैशियर आईडी 1 में जितने एम्प्लॉयज हैं उनका कैशियर पॉइंट। फॉर कैशियर आईडी 2 देर आर सम एम्प्लॉयज एंड दे हैव देयर ओन कैशियर पॉइंट्स। फॉर कैशियर आईडी 3 एंड कैशियर आईडी 5 वी हैव सम पॉइंट्स ऑन द एम्प्लॉयज। तो अब अपने को क्या करना है, जैसे कैशियर आईडी 1 इस तरीके से उसके एम्प्लॉयज हैं, ठीक। और हर एम्प्लॉय का एक एक पॉइंट्स दिया हुआ है, स्पेसिफिक पॉइंट्स है उनके पास, स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन ईच एम्प्लॉय। जैसे कि सपोज 100। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि यू हैव टू डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, पॉइंट्स, कैशियर आईडी विथ हाईएस्ट पॉइंट अंडर ईच कैशियर। मतलब हर कैशियर आईडी के अंडर में कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनके कैशियर आईडीज हैं, तो उसमें से जो हाईएस्ट कैशियर आईडीज है उनका डिटेल फाइंड आउट करना है एंड ऑल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्स यूज करने वाले, सिंपल। वी कैन यूज मैक्स इन दिस एज अ सब क्वेरी, ठीक है। वी विल यूज मैक्स इन ईच एंड एवरी कैशियर आईडीज यूजिंग सब क्वेरी, और उसमें से वी विल गेट द आउटपुट। सिंपल, सिंपल है, नो रॉकेट साइंस, लेट मी टेल यू दैट, नो रॉकेट साइंस। अब क्या होगा, लेट्स जंप इनटू द क्वेरी पार्ट एंड लेट्स राइट इट, ठीक। लेट्स जंप इनटू दैट। और एक चीज मैं आपको शो कर देता हूँ, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कैशियर टेबल, ठीक है। अब ये कैशियर टेबल में भी आप देख लो, आपके पास कैशियर आईडी और कैशियर लोकेशन है। मेरा क्या पॉइंट है कि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और मैक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेट्स डू दैट। ठीक है, we have joined that and we will find the output. Let's see what output do we get. Full join करते हैं, no worries for it. I need the whole output.
फुल जॉइन में तो सारा ही आउटपुट मिल गया, बट ओके एनीवेज। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सारे टेबल्स जॉइन हो गए, दो टेबल्स मतलब फीडबैक टेबल टिल हियर और ये कैशियर टेबल विद कैशियर लोकेशन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से जितने के आईडीज कैशियर टेबल में है, उन्हीं आईडीज में जितने एम्प्लॉयज हैं उनका मैक्सिमम आउटपुट निकालने वाला हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट सिलेक्ट मैक्स ऑफ employee points, employee points from this, what was the table, feedback table, ठीक है, and execute it, let's see do we get any error, क्या कहाँ इशू आ गया, ओ now let's execute this, ओके। अब देखो यहाँ पे जितने भी मैक्स, ओके ओके, इसको ज्वाइन करते हैं तब बेटर होगा, फुल ज्वाइन, why it is coming like that, wait a minute, we want cashier id and let's see, I want cashier id and the max point, like that, cashier id and the max points for this, let's see, okay, right now it's good, but why it is coming, what happened in this, let's see, cashier id, there is some issue in this, wait wait, there is some issue in this which we have to take care of, what's the issue, with the highest point under each cashier id, okay, what happened in this, let's find this, select cashier id max of
employee points as max points from table group by cashier ID. ओके, अभी तो ठीक है। हम्म let's use this thing here. Let's see. Select cashier ID. Let's see, do we get cashier ID is ambiguous? Sorry for that as well. Return only one column. Okay. Can we do like this? Let's see. Can we do like this? I just no, we cannot. Just want to use in subquery. That's my question. Cashier ID EMP points. I want to use in subquery where EMP points equal to this. Let's see, do return only one. Correct. Let's a minute. And max points. Let's see that do we get. Okay, max आ जाओ a bit because of order of execution. Okay, we have one query from Sridhar. Hi Sridhar, welcome to live stream. Hi Sridhar, welcome to live stream. We have one query like क्या मैं भी DA बन सकता हूँ like last year बीटेक CSC हूँ, मैथ्स बहुत गंदा, एप्टीट्यूड भी क्लियर नहीं हो रहा, एलिजिबिलिटी नहीं है, 52% है. No worries. See, first thing first, Sridhar, let me tell you one thing. अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसीलिए रहता है कॉलेजेस में बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ठीक है ना? ठीक है. और मैथ्स का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है डेटा एनालिटिक्स में. बेसिक्स जो बोलते हैं ना, बेसिक्स मीन मीडियन मोड, यही सब चीज का रिक्वायरमेंट है. बेसिक्स मीन मीडियन मोड यही सारा चीज का रिक्वायरमेंट है. वेरी बेसिक्स मतलब डीए के लिए very basics maths is required, so no need to worry about, no need to worry about it. ठीक है. आप क्या करना, one solution I have for you, that is you can start applying off campus. ठीक है ना? Off campus you can start applying. ठीक, you can start applying for off campus, better रहेगा. ठीक है, क्योंकि ऑफ कैंपस में वो लोग फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके पास एक ऑप्शन है स्टार्टअप कंपनीज में अप्लाई करने के लिए. वो आपके पास ऑप्शन रहेगा स्टार्टअप कंपनीज में अप्लाई करने के लिए, एंड यू कैन हैव अ गुड चांस इन गेटिंग एटलीस्ट अ कॉल, और एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल के लिए यू विल हैव अ गोल्डन चांस ऑन दैट. क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज में उतना दे डू नॉट सी फ्रॉम व्हाट कॉलेज यू हैव पास आउट और व्हाट वाज योर मार्क्स in 10th 12th. No need to worry about that.
You can start applying from off campus and you will get the output. Take so no worries about it. I hope you got it. Let us first check this. Employee points. I want like this. कि यहाँ पे अगर या मैं बोलूँ अगर where cashier ID, can we get this? No. Subquery must return only one column. Okay, let's remove this. Let's see, do we get any output? Okay, right now we receive the output. So we can write where a dot employee points equal to this. But why it is like this? More than one row returned by a subquery used as an expression. But there is no more than one row. Acha, more than one row you are saying. Hmm. Anyways, let me see, like, can we use in subqueries? Like, if you want, you can contribute here. It would be a good thing. If you want, you can contribute here about the subqueries and all. Okay, it's 1 hour for the live poll. Let's write the correct answer for this. So the correct answer for this is report view. Like, people has given the correct answer. So report view is the correct answer for this question. Okay. Let's give a question related to DAX. DAX. Take. And what's the use of DAX in Power BI? Let's see how many of you can give the correct answer for that. Okay. So our question is here in the live stream. So the question is DAX is mainly used for. Okay. What is the use of DAX in Power BI? So what is the use of DAX in Power BI? Let's see how many of you can give the correct answer for this. Okay. Okay. So anybody wants to contribute something in this subquery? I want to use this in subquery rather than using CTs. So anybody wants to contribute in this, it will be a good one. Okay. So we have cashier ID in this. Let me see here. Hmm. Okay, let me have something like cashier ID and this. Let me use it again here and let's execute it. Till here, let's see, do we get subquery must return only one column. Okay, right now let's delete this and let's see. Hmm. Okay,
So anybody here in the live stream can help me out in this. I want to use this question in subquery way, not in CTE way. Okay. I want to use this in subquery point of view. Anybody can help me out in this? Anybody can help me out? Hi, welcome to live stream. Hi, welcome to live stream. Hi, skilled CA, welcome to live stream. Samarth, how are you? Welcome to live stream. And my name is Shubham. Actually, you might have forgotten the name. It's Shubham. Okay. So, how are you, Samarth? After a long time, and thanks for uh, taking up the membership for this YouTube channel. Thank you for that, Samarth. Really, thank you for this. Really, thank you for this. So, Samarth, how are you? Okay, we have. Do we have any more query? Okay, we have two more queries from Samarth. Like, hi, autotype. My brother name is Saurabh. Okay, okay. Arre, no worries, no worries, bro. No worries, no worries for that. Okay, okay. We have one more query from I am automation. Hi, how are you? Welcome to live stream. Welcome to live stream. I am a software tester as of now with skills Java, Selenium, Tosca, and APIs. Okay. Please tell me for remote job from other country, what should I do? ML or DA or dev deeper or dev or deeper in testing. So I would say software testing ना remote jobs के लिए I would say you have to start searching with the filter option with this in naukri.com. Just go with the filter option for remote jobs first thing first, and related to foreign jobs there are different kind of I mean applications like naukri का जो नौकरी गल्फ एंड ऑल यू कैन चेक दैट आउट related to software tester there will be related to any IT domain obviously there will be remote jobs. Let me tell you that just you have to apply the filter and also start searching in naukri gulf. It will help you out. ठीक है, it will help you out because they actually hire people in IT especially in remote point of view in that. ठीक है. And one more thing, you are a software tester, right? Software tester में I would say because the thing is I don't have that much knowledge in software testing. I am a data analyst, that's why I'm just not idea in that. But अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो तो आई थिंक यू माइट बी हैविंग नॉलेज इन APIs एंड क्लाउड. ठीक है, API एंड क्लाउड में कुछ नॉलेज है क्या आपका? लाइक API प्लस क्लाउड सर्विस. Do you have any knowledge in this API and cloud service? I hope you would be having all this knowledge. ठीक है, API and cloud service अगर ये सब का knowledge है so it's a good one I would say. Increase our knowledge in these two things, right? Increase knowledge in these two things I would say. And related to ML or DA or developer or deeper in testing. Hmm, deeper in testing.
let me tell you, for cloud service, see, whatever skills you have and whatever workx you have, we can attach this. I mean, we can use that skills in DS and DE. ठीक है? I mean to say in data science and in data engineering, because in these two things require cloud service skills. ठीक है ना? So if you want, you can start your journey in either DS or DE. It would be a better thing. ठीक, because no doubt in DA, DS and DE, SQL and Python are required. ठीक है? SQL and Python are obviously required. These two things. So this two things will be used in both these two domains, DS and DE. So with the help of this knowledge, you can grow easily. Why I'm saying you can grow easily? Because already you would be having this cloud and API का knowledge with WorkX. ठीक है? With WorkX. So this is plus point for you. This is really a plus point for you. Plus these two things, if you can gather knowledge easily, you would be very flexible to work in any of the domain, either in DS or D. Okay, so this is what suggestion I have for you. Okay, we have one more query from Samarth. I am doing good. Busy in work, unable to learn SQL beyond basics. No worries, Samarth. I know working profession, like working plus studying, it's really a tough job. I can understand that. It's really a tough job because I have also faced the same scenario when I was studying during my corporate work ex. ठीक है? I know that it is really tough, really tough. But let me tell you one thing: whatever basics knowledge you have in SQL, make sure you practice questions on that skills as well. मतलब only with that skills, if you whatever skills you have, basic skills, if you practice only that thing, at least your basic knowledge will be there and you won't be forgetting these things. That's what I'm trying to say. Just practice whatever basic knowledge you have in SQL, practice questions on that. That's what I used to do. Because see, for us, like who is to work and learn, every day won't be same. Any day you would be working 8 hours, someday you would be working 12 hours, someday you would be working 12 hours and you would be tired. So at that time it is really tough to learn new things. So rather than that, to satisfy yourself and satisfy your mind, I would say at least whatever basic knowledge you have, uh, start practicing on that. At least this knowledge will be there with you and you won't be worrying about the basics things related to the advanced or intermediate part. Whenever you get time, just start studying all those things. Okay, all those skills. That's what suggestion I can give you, because that's what I did for myself when I was at your stage. Okay, because every day won't be same for any of the working professional, let me tell you. Because it is easy to say ki, ha, you can study while working, but it's not that easy. You would be tired, you would be mentally very tired. Rather than physically tired, you would be mentally very much tired. And for learning new things, you should be mentally very cool and calm. ठीक है ना? For that, whenever you are free, like whenever you did 8 hour job, 8 hour work, or 10 hour work with cool mind, that time you can learn kind of intermediate or advanced things. But let me tell you one thing: every day you can at least practice the basic topics, whatever you have knowledge about. So that would be a good practice for you as well. मतलब basic knowledge जो है वो आपके दिमाग से हटेगा नहीं, वो आपके दिमाग में रहेगा. और जो एडवांस है, वेन एवर यू आर फ्री, वेन एवर यू आर हैविंग अ कूल माइंड, स्टार्ट लर्निंग एडवांस एंड इंटरमीडिएट स्किल्स. ठीक है? Okay, we have one more query from I am automation. Started DS course already. Yeah, that's what I told you here.
That's a good one. ऑलरेडी यू हैव नॉलेज फॉर क्लाउड स्किल्स, ठीक है, क्लाउड्स एपीआई ये तो है। तो आप अगर ये दो चीज एडिशनल सीख लेते हो, यू स्टार्ट लर्निंग दिस टू थिंग्स properly, then with the help of workx you would be able to flexibly cope up with any of the data related domain, either data science or data engineering, ठीक है। So that's what I told. So you took data science, that's a good one, that's really a good one, I would say. So start learning, I mean, wherever you took the course, learn from there and practice on a consistent way, ठीक है। practice daily, I would say, please practice daily भाई, sorry, practice daily, let me tell you, because if you don't practice daily you will start forgetting all the skills and all the techniques that you have learned, because simple maths, programming language, they are the same thing. Like maths, if you don't practice every day, just remember your class 10th and 12th studies. At that time you used to practice the whole NCRT RD Sharma book, if you're using RD Sharma or RS Agarwal books, like full all the questions of all the exercise, same for 12th. Then only you are able to give good solution or proper solution in your board exams, ठीक है। You have 1 year and you practice everything, physics, chemistry, maths till 10th, I'm saying, English, Hindi, additional language plus questions from maths, everything. So how is it possible? Simple, you used to practice these things on a daily basis. So programming language is same as maths. Practice on daily basis, then only it will stay in your mind, and you can, like, just by seeing the question only you can give out the answer, let me tell you. And how is it possible? Consistent practice, simple. There is no rocket science and there is no other way to do it, ठीक है। um, okay, we have one more query. Can I refer your videos for that? Sure, like if you, yeah, let me tell you one thing. If you refer to any project videos, all those basic knowledge will be done and dusted. ठीक है, basic knowledge will be cleared out. Let me tell you, basic knowledge will be cleared out. And for SQL, if you do this assignment, your most of the question, most of the techniques, most of the logic will be covered. Trust me. It is true. Most of the topics will be covered. So just chill. You can check out my project videos and you can also start practicing those assignment questions as well. Okay, great advice, thank you. Yeah, welcome brother, welcome. I can't believe I was solving integration with confidence, now I can't even add numbers. See, actually the thing is, as a CA your maths would be better than most of us people in the live stream, let me tell you, because your maths, you would be very good at maths. I can know that because you are a CA, and for CA maths is everything. Maths is CA's career, let me tell you. So don't lose confidence, let me, because your maths is far more better than any of us who are in the live stream. That's the thing, because your whole day is full of numbers, calculations and all. So no doubt this integration part, differentiation part, that needs practice. But anyways, if you practice it right now, then also you will be able to solve all the question. If you start practicing right now, but why you will practice? Just that's a if you want to practice, you can do it. But right now, it's of no use. Right now, whatever maths like arithmetic progression, AP, and geometric progression, like this kind of things, you would be using in your CA skills or in your CA work. So if you have this much knowledge, then yeah, it's good to go, because I have forgot about this AP and GP, these two things, arithmetic progression and all those things, and these are mostly used in banking domain, mostly used in banking domain.
because we have solved a lot of question related to banking domain when we are studying during our 10th 12th coaching institute. So you might be having a good knowledge of this, and that's more than enough for your work. So that's the thing. Hey, hi Jay, welcome to live stream. Hey, hi Mohammed Safan, welcome to live stream. Hi Jay, welcome to live stream. Hi Safan, welcome to live stream. How are you all? Welcome to live stream. Right. Uh, okay. So that's the thing. So anybody have any doubt in the live stream? They can ask your doubts. Anybody have any doubt in the live stream? They can ask your doubts in the live stream. I can help them out. Thanks for your kind words. Bye. Yeah, bye bye. Take care. Bye. And on 1st December, I will be uploading the English version of the video. Please do watch that and give your feedback. Okay. So right now for November, I have uploaded the Hindi version, and from January onwards, I will upload both Hindi and English on the same month. Okay. So, and mainly on Jan, I am planning for healthcare and finance wala project. ठीक है. For January, my plan is for healthcare plus finance. Healthcare plus finance मतलब कि finance domain in healthcare. I want to do projects on this, and it will be both in Hindi and English. So please do watch that as well. ठीक है. And give your feedback. ठीक. Whatever feedback you want, you can give it. I'm I will be applying those things in my project. ठीक. So 1st December. Okay. So okay, by that time, anybody can help me out in this question. I just want to use this subquery. I know with CTE I can use it, but I want to use subquery in this. In this matlab subquery in this question. ठीक है. Let's. I have an idea on that. Let's see if it works. Let's see. Do it. Mhm. No, it's not working. Okay, we have one more query. Why can you make a video on how to set up environment in Python, SQL, and any visualization tool in a local computer? See, for visualization tool like Power BI is simple. Sorry, Power BI and Tableau. What happened in this? Okay, charging issue. Just a minute. Let me keep this. ठीक है. For Power BI and Tableau, it is directly installer. ठीक है. Directly you can install it. No worries for that. Python, I would recommend to use Jupyter Notebook. Jupyter Notebook for SQL. Either you can go for
PostgreSQL, or you can go for SSMS. Anything is good. Can you make setup for environment? There are lots of YouTube videos, but anyways, I will make it once I get time. Once I get time, I will surely make it. The reason why I'm not making this, because Safan, the thing is there are lots of videos for this, for Mac, for Windows. There are lots and lots of videos. Okay, for this. So that's the thing. What happened to this right now? Okay. So the thing is, for this, what we say is that uh, for Mac and Windows there are lots and lots of videos. So that's why I'm not making for this. Okay. So any more doubts? Anybody have any more doubts in the live stream? Okay, we have one more query from Jay. I know foreign key like it use primary key as reference and it creates relationship between two or more table using primary key. Using primary key. By can you explain? Matlab, wait. Just a minute. Hmm. So I know foreign key like it uses primary key as reference and it create relationship between two or more tables using primary key. Why can you explain it in more? Just I found FK is more complex than PK. See, first thing first, it is correct. It is correct. Your thought process is correct. The thing is कि foreign key is actually complex then primary key. There is a reason behind it. Simple reason क्या है? Primary key is, wait, let me say that. Primary key is based on one table. ठीक है? So there is no hodgepodge in that. Primary key is based on one table. लेकिन जो आपका फॉरेन की रहता है, ठीक है, फॉरेन की क्या है, आपका रिलेशनशिप्स भी रहेगा बिटवीन द टेबल प्लस रूल्स, जितने भी रूल्स आपने लगाए हैं ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ टेबल एंड ऑल, वो सारे का जॉइंट वेंचर है फॉरेन की. नॉट जॉइंट वेंचर मतलब वो सारा चीज मिला दोगे तो वो रहेगा फॉरेन की का आउटपुट. मतलब बोलते ना रिलेशंस प्लस रूल्स आर इनटू फॉरेन की. ठीक. ओके, वी हैव 2-3 मोर क्वेरीज फ्रॉम सफान भाई. ओके भाई, हाउ टू डाउनलोड पावर बी आई इन मैक? एक महीने से ट्राई कर रहा हूँ, एंड में गया भाई. पावर बी आई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पावर बी आई सिर्फ विंडोज लैपटॉप में डायरेक्टली डाउनलोड हो सकता है. डायरेक्टली डायरेक्टली विंडोज लैपटॉप, आई मीन विंडोज ओएस में डायरेक्टली डाउनलोड हो सकता है क्योंकि वो विंडोज का ही सॉफ्टवेयर है. मैक के लिए आपको
ये डाउनलोड करना पड़ेगा पैरेलल्स। उसके बाद क्या है, पैरेलल्स डाउनलोड करने के बाद उसमें विंडोज ओएस चलाना पड़ेगा, फिर जाके आपको बीआई से काम होगा। पावर बीआई मैक में नहीं होने वाला है, डायरेक्टली तो नहीं होगा, डायरेक्टली यू वोंट बी एबल टू डू। ठीक है, directly you won't be able to do it. Let me tell you, you have to download parallels for that, then only in Mac, then only you can start using Windows OS in that parallels and then start using Power BI. ठीक। Hey, hi NKC videos, welcome to live stream, welcome to live stream. Bro, how are you? I am good, I am good. Tomorrow is my interview. Here is the JD. Okay, you can send me the JD, I can see that job description. Yeah, back to J। तो आपने पूछा था कि जैसे प्राइमरी कीज और उसका क्या। देखो प्राइमरी कीज सिंपल है, वो ईच रो को आइडेंटिफाई करता है यूनिकली, ईच रो को आइडेंटिफाई करता है टेबल में एंड वर्क ओनली विद इन दैट टेबल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी कीज क्या है, सिंपल, इट यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रो। ठीक है, ईच रो एंड वर्क इन दैट टेबल, वर्क इन दैट पर्टिकुलर टेबल, वन टेबल। ठीक है, उसमें क्या ये सब ज्यादातर चेक करता है कि डुप्लीकेट्स ना हो, या तो कोई नल वैल्यूज ना हो, या तो नो नल डुप्लीकेट्स, ये सब वो चेक करता है। ठीक है, प्राइमरी की। लेकिन जो फॉरेन की रहता है, फॉरेन की क्या रहता है, वो ज्यादातर रिलेशनशिप क्रिएट करता है टेबल्स के बीच में। ठीक है, इट क्रिएट relationship between the tables, relationship between the tables, simple। ठीक, मतलब how it creates relationship, it refers the primary key of another table and create relationship। मतलब refers primary key of another table and creates relationship on that, simple। तो जो फॉरेन की है, कॉम्प्लेक्स इसीलिए लगता है बिकॉज इट इज नॉट, मतलब वो नॉट ओनली डेटा वैलिडेट करता है बट ऑल्सो कंट्रोल व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अपडेट और डिलीट ऑपरेशन। मतलब डेटा वैलिडेशन तो रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट ये डेटा वैलिडेशन तो रहेगा ही उसमें, प्लस ऑल्सो इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स थिंग्स। कॉम्प्लेक्स थिंग्स मतलब कॉम्प्लेक्स थिंग्स मतलब जैसे कि आपका एनी वर्क लाइक, जैसे कल मैंने बताया था ना, अपडेट डिलीट, ये सारे चीजें, ये सब वो टेक केयर करता है। ठीक है, दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑल। ठीक, सो सिंपल वन लाइन आंसर मैं तो बोलूँ, प्राइमरी की इज जस्ट द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ये। और फॉरेन की क्या है, इट इज फुल अबाउट रिलेशनशिप और कंसिस्टेंट work on whatever updates or data validation we do। ठीक, that's the thing। ठीक, I hope you got it, but still if you have any doubt you can ask more doubts on that, I can help you out। ठीक है, I can help you out in that। Okay, we have one more question, one more query from NKC video, like I hope this is the job description, support data processing and model training task। okay, AI से related है क्या, is it related to AI? assist in experiment evaluation documentation, senior professional to integrate model into application, conduct research। so is it AI based है क्या, AI based work
है क्या ये वाला? इज इट एआई बेस्ड? एआई बेस्ड जॉब वैकेंसी है क्या? Okay, we have one more query from NKC video. The position is for AI developer training. Okay, okay, okay. We are correct. I can understand from the JD only. मतलब जिसमें बोला है ना मॉडल ट्रेनिंग, सो आई थॉट लाइक आई हैड अ गेस ऑन दैट कि ये एआई बेस्ड रहेगा कि नहीं. एंड ऑल्सो यू हैव रिटन राइट नाउ आई हैव रिसीव्ड योर query. The position is for AI developer trainee. So yeah, it's the thing. Yes, okay. So that's a good one, but AI developer, hmm, not that much acquainted in that. One thing I know that maths is compulsory for this linear regression kind of maths and all. This is compulsory for that. Compulsory, matlab it is mostly used in AI ML work because I have seen my colleagues used to work in all those things. So that's why I'm saying I'm not that much into it because I am a DA, but all my DS friends who are into data science friends, they used to do all those malab evaluation kind of work they used to do. So that's the thing. So no idea in that, but let me tell you, maths is very much compulsory that I know. Take. Okay, we have one more query. But I am versed in DA and hardly knows any modeling. Obviously, DA is full into SQL and Python, na? Full into this two things, maximum into two things or any BI tools. ठीक है. For this मतलब AI ML work, that means it is related to either DS or either fully into data science work. So अगर आपका मैथ्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है, सो यू कैन गो एंड अप्लाई ऑन दैट. मैं तो बोलूँ you can go and start applying on this. Matlab, if you know anything about maths, then no worries. It will be easy for you to crack this thing. And it is for freshers, so they won't be asking you that much question because freshers, they also know कि someone who is having any basic knowledge is good to go. ठीक है. Hmm. Okay. Any more doubt? Any more doubt? Okay, we have one more query from J Jones and NKC videos. NKC videos, all right, thanks. चलो भाई, welcome भाई, welcome. J Jones, क्या can you tell me rules and behavior of FK like? Okay, let me write it here. Like it can take null and values are not forced to be unique. Is there any other important rules using it? See, FK, first thing first, this foreign key can contain null values. ठीक है. Can contain null values unless it is defined as not null. मतलब unless if you define it as not null, it can take null values. ठीक है. And one more thing, एफ के जो है मतलब फॉरेन की it is not necessary that it has to be unique. It is like foreign key values do not have to be unique. Duplicates are allowed. I mean to say duplicates are allowed in this. ठीक है.
And one more thing. uh, One table, there can be any number of foreign keys in one table, any number of foreign keys in one table. Okay, any number of foreign keys can be there in one table. So that is one more thing. Multiple foreign keys can be there. And okay, and if you are aware of any of the rules, any of the techniques you are aware, if you are aware जैसे कि uh, set null या तो set default, like this kind of thing, if you are aware of this, then you can easily control all the delete and update behavior. So delete and update behavior can be controlled using this set default and set null. मतलब if you use rules like set null या set default, तो you can have a good control in this delete and update kind of thing. ठीक है, and बाकी क्या है? Hmm. हाँ, in foreign key one more important thing in foreign key, make sure the data type and data size must match the whatever column you have done the reference. Okay, let me write. Whatever reference column you have, make sure it follows some criteria and rules. ठीक है, it should match the data type, it should match the data type, also it should match the data size. It should match the data size. ठीक है, that's one thing. So this is what additional details I can give you from this. ठीक है, I can give you from my knowledge related to FK, like foreign key. ठीक है, these are some rules I would say. So any more thing you need to ask, you can ask me. Any more thing you need to ask related to this foreign key, I can help you out in that. This is what knowledge I have, and this is what rules I have told you. So take care of these things. Any more idea, any more doubt, if you want to ask, you can ask. Any more? Let me just refresh it. Do we? Hmm, do we have anything? Where PK and FK use except joints? Hmm, except joints, I would say it is used at lot of things. मतलब जैसे कि
जैसे इंडेक्सिंग एंड परफॉर्मेंस, जैसे इंडेक्सिंग वगैरह में क्या रहता है, लेट मी टेल यू दैट ड्यूरिंग वेट इंडेक्सिंग वर्क डूइंग दैट। तो जो प्राइमरी की है, यू नो दिस, आई थिंक यू माइट हैव लर्न अबाउट दिस, प्राइमरी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एन इंडेक्स, ठीक है, सॉरी, automatically creates an index, ठीक है, प्राइमरी की। एंड बाकी जो फॉरेन की है, often you know when you make a reference on this foreign key, foreign key often uses this index, I mean to say, sorry, foreign key often uses this index, and joins become faster because of this pk and fk. And if you are using joins now in this scenario, then it become much faster, so faster processing would be there, so faster processing would be there. Why? Because of this primary key and foreign key relation with the index, ठीक है, that's the thing. So this is one thing I can say. और बाकी और एक चीज़ है related to joins, you can also uh, say this thing, मतलब जो foreign की है, this foreign key defines whatever happens in child data. See, whatever happens in child data, whatever happens in this, foreign key defines that, ठीक है, simple, foreign key defines that whatever happens in child data, ठीक है, if you write, like I told, if you set null or something, it get defines. So these things are really impossible using joins, so that's why foreign key and this what we say, primary key are really useful for this, because see, foreign key is all about this thing, whatever it defines, whatever happens in child data, it defines that, and it is impossible using joins, let me tell you. So this is one more thing, I would write this, impossible using joins, take. So that's the thing. So this two things I can say for this. Like, are you asking about this kya matlab? Because this is one liner question, that's why, like, if you can explain properly what you are asking, I could have helped you very nicely. So are you asking about this, like where we can use joins with the help of this foreign key and primary key, is it that? So okay, still anybody any more doubts? Like, if you want to add something, Jay, you can add, I can help you out in this as well, if you want to add something more in this.
Yes, sir. Yeah, you can add anything more in this. I can help you out. Okay, I can help you out properly. If you want to add anything more in this, please ask. I can help you out in this on a proper way. So let's see, do we have. So still anybody have any more doubts? Okay. By that time, let us work on this. I want to work on this using just subquery, nothing else. Just using subquery. So anybody can help me in this? Okay, we have one more question. Actually, I know only basics of it, so I don't know much more about it. No worries, you will start studying all this. These are the basics things only. Matlab, these are very basic thing. Whatever I've told you right now, and this primary key, foreign key, only basic things are involved. So no worries for that. Once you start learning about these things, you will be able to cope up with all those stuffs. I mean to say. Okay, like what to ask and what can help me understand better. No worries, no worries. You just study. Like if you have any doubts during your studying phase, you can ask your doubts related to whatever things you have studied. I can help you out in this. Okay. You can just join my live stream and ask. If not able to join live stream, then my mail ID is also there. Directly ask me in this mail ID. Okay. I will help you out. Right. In case you get doubt in middle of somewhere, like not during my live stream, you can directly mail me your doubts in this mail ID and I will help you out in this doubt session. So anybody can help me out in this question related to subquery. Anybody can help me out in this. I want to use subquery in this. I can use CTE. I can use common table expression. I can also use what we say Windows function, but I don't want to use that. I just want to use this subqueries and find out the solution. Just I thought of one thing. Let's see. Can I use this things without joins? Like I want.
this cashier ID, then I will write select max of employee points from again feedback table B, ठीक है, where A dot ID is equal to B dot cashier ID. I am just avoiding this thing. This what we say. I am just avoiding the joins and I'm using this. Let's see if it works. From I'm just using that. Let's see if it is possible to find out. Okay. We have got it. So we have got it without using joins. So that's a good thing. Right, right. Okay, we have one more query. Okay, sir, thank you. Yeah, welcome, bro. Welcome. No worries for it. You can just ask your doubts. I can help you out in the mail itself. Okay. If you have any doubt anytime, just ask your doubts. I will help you out through the mail that you have sent. Okay, so I need name as well. A dot employee name. Let's see, do we get something? Yeah, we will get. No, employee name does not exist. Okay. Suppose I write not name. I just want all those things. Select everything. Let's execute. Sorry. Okay, and right now I need from feedback table. In cache table. Let's see. Here in group by. No, it's not working out. It's not working out in this way. So,
Let's see. No, it's not working. Okay, let's do one thing. Can we do self join kind of thing? Let's do this. Can we do self join and work on that? Select everything from feedback table. Cashier ID. Let's. It will give you all those things, which is not necessary. Hmm, Same thing. Inner join also same thing. Let's select everything from feedback table A. Suppose I want max of employee points as max points from feedback table profile cashier ID. Okay, it will give you the max points. From cashier table B on A dot cashier ID equal to B dot cashier ID. Can we do something here? Mm.
What if I say a dot max points equal to b dot b dot, ओके ये कैशियर टेबल में नहीं है, ये डॉट एम्प्लॉय पॉइंट्स, I don't think it will work, it does not exist. Mhm. In order of execution it won't get access, right? Okay, so we, it is not allowed here, we will be taking care of this using only this subquery. Okay, let's go with the previous one like what we used to do. So like select cashier ID, max of employee points as max points from feedback table A, join cashier table B on A dot cashier ID equal to B dot cashier ID, group by cashier ID. Tick. I will do full join so that I could get all the data. I received all the data. ठीक है. I will write with T1 as this. Then I will write select everything from T1, join feedback table P on T1 dot ID equal to P dot cashier ID and execute it. अच्छा मैक्स पॉइंट स्टार्टिंग में ही आ गए, ठीक है. Right now I will write where B C rather than writing B. Where C dot uh, employee points equal to T1 dot max points. ठीक है. Here is the output. For cashier ID 150 is the highest and we got the 150. For the employee ID 2. For cashier ID 2 we got 5 and 6 as the highest point. For 3 it is 65, it is 70.
So we got the output for it. ठीक. Okay, we are done with the second question. DAX, what is DAX mainly used for? DAX is actually mainly used for creating calculation and measures. That's the correct answer. ठीक है. Creating calculations and measures are the correct answer for this. DAX are mainly used for creating calculations and measures. ठीक है. Okay, right now let's move to the visual part. ठीक है. Let's move to the visual part. Let's see what output do we get related to Power BI visuals. Let's see how many of you can give the correct answer for it. And read the question properly. Like, which of the following is not a Power BI visual? ठीक है. Which is not a Power BI visual. Remember that. And give the correct answer for it. Not a Power BI visual. ठीक. Hey, hi Yash, welcome to live stream. Sir, what are those assignment and where are they from? This assignments, whatever assignment you are seeing, is collection of all the questions. Like you can get this assignment from this. I have sent the video link. From this video link, you can directly jump into the description box and you will get the Google Drive link for this assignment, like for questions and all those database. You can get the questions and database for the assignment. Okay. And this assignment, let me tell you, it is a mixture of first thing where I got those assignments. This questions are mixture of all the interview questions, and where I have got those interview questions from Reddit post, from LinkedIn. I've got those interview questions. So it is mixture of interview questions, basic questions, basic questions in SQL, basic questions in concept. ठीक है, in SQL. Second thing is like all the challenging question which I have faced during my work ex and during my freelance work. ठीक है, during my work ex and during my freelance work, whatever questions or whatever challenges I have faced, that kind of questions are there in this. So it is mixture of all those questions. This interview question, which from which source did I get from? I got from Reddit and LinkedIn. And this basic questions, so whatever you create from your own side, those basic questions, concepts related question, and also challenging question, whatever scenario I have faced during my work ex and during my freelance work, that questions, it is a mixture of all those questions. Okay. And related to data set, where I've got those data set, this data sets are from mixture of tables from Reddit. Okay. From Reddit source, I have got those tables, I have mixed it, and whatever questions I can get from this interview point of view and from basics question point of view, I have made questions on that. Okay. So if you do all these assignment questions, your basics concept, I mean to say your basics, your interview preparation will be done properly. Okay. For SQL, at least for the SQL part. Okay. That's the thing. That's what it is all about, right?
So anything related to the basic questions related to interview preparation, if you do all those questions from assignment, you will be able to excel any of the, even the lead code questions as well, any of the lead code questions, any of the interview questions, you can easily get the solution and get the concept, or I would say you can easily build up logic from your own side. Take, that's the thing. And where you will get those questions from the SQL assignment video. From the SQL assignment video in the description box of this video, what I have given the link of, in that you will get the Google Drive link. Just go to that link, you will get the data sets, you will get those questions from there, right? You will get those questions, no worries for that. And also all the tables data set, plus it is in create table and insert into format. So create table and insert into format. So you can just copy and paste this queries, matlab, copy and paste in your SQL environment, and you will get the output. Even though I have given the Excel file, but if you face any error during import of this Excel file, so for that I have given create table and insert into for those things. You can just copy the create table, insert into queries and paste into your SQL environment. It will work, right? So anybody have any more doubts in the live stream? Anybody have any doubt in the live stream? So anybody have any doubt in the live stream? Any doubt? Any doubt? Anybody have any doubt? They can ask your doubts in the live stream. I can help you out in this.
Okay, we have one more query from Yash. I want, sir, I know what DBMS and RDBMS and SQL is, but I have only heard about MySQL and PostgreSQL. Okay, okay, no worries. So PG admin and SQL server. Yeah, I think MySQL is that. Yeah, SSMS. These are the things. Okay. What are those, and do they have their own platform to do work? Like, are there some kind of software to see? MySQL and PostgreSQL and MySQL, they are actual software, but it is better to say, rather than saying software, it is better to say, it is better to say database software. It is better to say that. ठीक है. You told the correct thing. It's a software, but still, I would suggest it's better to say database software. ठीक है. So both, what's the difference in it? Like, both have their own database engine and both run as server process. So they are kind of tools where we work on them. I mean to say, they have their database engine, own database engine. ठीक है. And this two software, database software, get installed in your local machine, or I mean say local computer. ठीक है, simple. So they are the RDBMS software products that you install in a local laptop server or in your machine to store, manage, write query data using SQL. ठीक है, that's the thing. And how they work, process of work also, let me tell you that. Like, first process, you write SQL queries. ठीक है, you write SQL queries. First thing, you send that thing to, like you told, MySQL or PostgreSQL. You send that things to them. ठीक. In this, what I have told, what these two things are, database engine. ठीक है, they have two things, this database engine. So what will happen, the database engine, it will see the query and process the thing. Database engine see the query, it will see the query and process, and then it will process the query as well. ठीक है, it will process the query as well, and after processing the query, it will check two things: is it written properly or not, or not proper. If it is written properly, then you will get the output. If not proper, then you will get error. ठीक है, this is how things work. ठीक, that's the thing. Okay, we have one more. So for me to learn and practice SQL, I have to install MySQL. Not necessary. You can install MySQL, PostgreSQL. There is one more thing called dbeaver. I mean to say, dbeaver and PostgreSQL queries are same. ठीक है, that's the thing. Simple as that. And you can use anything. It is not necessary, it is not strictly necessary that you will install MySQL. You can install that. You can also install PostgreSQL and dbeaver, anything you want to. ठीक है, rather than dbeaver,
it is better to install PostgreSQL, and it will get installed in your Mac or in your Windows laptop. There is no restriction in that as well. ठीक? So that's the thing. And that, yeah, that's it. You can install anything. There is no restriction or there is no stricter policy that you have to use MySQL or PostgreSQL. You can install anything. Your wish. ठीक है? You can install anything. That's the thing. Hey, others, welcome to live stream. Hey, others, welcome to live stream. Welcome. Okay. Hey, hi, Ajit. Welcome to live stream. वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम अजित एंड आदर्श. ठीक है, तो आदर्श पहले मैसेज किया, ब्रदर तुम पावर बीआई पढ़ा दो लाइव प्लीज अगर पॉसिबल हो तो. भाई अभी के लिए पावर बीआई का प्रोजेक्ट चल रहा है फ्रीलांस वर्क में. ठीक है, तो फ्रीलांस क्लाइंट के साथ जो काम कर रहा हूँ वो पावर बीआई का प्रोजेक्ट ही चल रहा है अभी. अगर आपको पावर बीआई वगैरह पढ़ना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी उस प्रोजेक्ट में मैं थोड़ा बिजी हूँ. हालांकि 1 दिसंबर को आपको पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा. और अभी जो मैं प्रोजेक्ट बनाया हूँ पावर बीआई का, इट इज द वेरी बेसिक प्रोजेक्ट. तो आप चाहो तो उससे एक आइडिया ले सकते हो. उस प्रोजेक्ट से उतना कुछ टफ नहीं है. यू कैन गेट सम आइडिया. और बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दैट. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी डायरेक्टली आई कैन नॉट स्टार्ट पावर बीआई का टीचिंग वाला सेशन. ठीक है, इवन तो प्रैक्टिस सेशन के लिए भी आई हैव टू थिंक अबाउट क्वेश्चंस एंड ऑल. ठीक, तो अभी के लिए फिलहाल प्रोजेक्ट आपके पास मिल जाएगा 1 दिसंबर को 10 बजे. यू विल गेट द प्रोजेक्ट एंड वर्कशीट. तो उससे आप थोड़ा मोड़ा एटलीस्ट बेसिक्स जो है ना, वेरी बेसिक, मतलब बोलते हैं ना वेरी बेसिक ऑफ द बेसिक, वो आप समझ सकते हो पावर बीआई का. ठीक है, वो आप इजीली समझ सकते हो जो 1 दिसंबर को जो प्रोजेक्ट आएगा. तो यू कैन गो एंड वॉच दैट. एंड अजित, कैन यू टीच एमएल? भाई एमएल तो आई कैन नॉट, बिकॉज आई डोंट हैव आइडिया इन दिस. आई एम अ डेटा एनालिस्ट. तो इससे रिलेटेड कुछ पूछना है पूछ सकते हो. सीक्वल पाइथन से रिलेटेड कुछ पूछना है पूछ सकते हो. आई कैन हेल्प यू दैट. ठीक है, आई कैन हेल्प यू इन दैट. ठीक, इसके ऊपर अगर कुछ है तो भाई इट विल टेक टाइम. ऊपर मतलब पावर बीआई रिलेटेड कुछ है तो आई विल एग्जैक्टली मैं करूँगा उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स. तो अभी धीरे धीरे ये कर रहा हूँ मैं. इससे रिलेटेड आई विल गिव यू सम टीचिंग सम लर्निंग लेसन्स. बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी मेरा खुद का काम चल रहा है पावर बीआई का फ्रीलांस क्लाइंट के साथ. दैट्स द थिंग. और जब एक बार काम कंप्लीट हो जाएगा फ्रीलांस क्लाइंट के साथ, मेरे पास आइडियाज आ जाएंगे कि किस बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाना है और किस बेसिस पे टीचिंग देना है. तो उसके बाद मैं प्रॉपरली कर पाऊंगा. अभी क्या है, सीक्वल और पाइथन में अच्छा खासा वर्क एक्स है तो उसके दे रहा हूँ. इसलिए मैं इजीली प्रोजेक्ट वगैरह या कुछ लर्निंग या डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूंगा. पावर बीआई का क्या है, मैंने जितना काम किया है वो सिर्फ रिपोर्टिंग बेसिस पे ही काम किया. मतलब रिपोर्टिंग बेसिस और मीटिंग बेसिस पे ही मैंने काम किया है पावर बीआई का. ठीक है, इसीलिए अभी जो काम चल रहा है इसमें थोड़ा ज़्यादा एडिशनल वर्क है. मतलब मैं उतना बोल नहीं सकता बिकॉज अभी वो रिसेंट काम चल रहा है एंड आई कैन नॉट टेल दैट मच. वंस वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा मैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी लेके आऊँगा ताकि आपको इजीली समझ आए. प्लस उससे रिलेटेड मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे दूंगा. सो दैट्स द थिंग.
और किसी को कुछ डाउट लाइव स्ट्रीम में, किसी को कुछ डाउट? ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। मुझे डेटा मॉडलिंग में बड़ा दिक्कत हो है। देखो भाई, नॉर्मल चीज़ है, डेटा मॉडलिंग स्टार्टिंग में टफ लगता है, नो डाउट, मेरे को भी लगा था, सबको लगा होगा। लिख के दे रहा हूँ, आज के डेट में जितने जितने भी डेटा एनालिस्ट या कोई भी डेटा रिलेटेड फील्ड में है, यू कैन डू दैट। ठीक है, यू कैन आस्क देम, दे कैन हेल्प यू आउट, एंड दे विल से दिस थिंग कि भाई डेटा मॉडलिंग में इशू रहता है। क्योंकि ये सिर्फ सीक्वल नहीं, बल्कि जितने भी मैंने अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, जितने मैंने रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट किए हैं, उस पे डेटा मॉडलिंग इज यूज्ड। मतलब जैसे कि टेबल्स और रिलेशन में कैसे उसको एक जगह पॉइंट आउट करना है, मतलब जैसे कि कैसे टेबल रिलेशन को कैसे एक जगह बनाए रखना है, प्लस कैसे रिलेशनशिप बनाना है इनके बीच में कि वो रिलेशनशिप आगे वाले जितने टेबल्स है उस पर कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, उस पर कैरी फॉरवर्ड हो, वो सब चीज़ें देखना पड़ता है। उसका सिंपल अप्रोच मेरे को क्या लगा पता है? सिंपल अप्रोच ये लगा कि उसके जितने भी एंटिटीज हैं उसको आप ध्यान में रखो। ठीक है, उसको ध्यान में रखो, उसको आइडेंटिफाई आउट करो। ठीक है, क्योंकि हर एंटिटी के लिए एक प्राइमरी की होता है। मतलब देखना, हर एंटिटी के लिए, फॉर ईच एंटिटी दे हैव वन प्राइमरी की। मैं पी के लिख रहा हूँ प्राइमरी की के लिए। और प्राइमरी की क्या रहता है? हर टेबल के लिए एक रहता है। या तो इट इज बेटर टू से दैट कि हर एंटिटी के लिए अलग टेबल, और हर टेबल में एक अलग प्राइमरी की रहता है। और उसमें रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं? जैसे वन टू मैनी, सिंपल वन टू मैनी रिलेशनशिप रहता है, फिर मैनी टू मैनी रहता है, इस तरीके का। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रहता है। ये सब रिलेशनशिप आप पावर बीआई में भी देखना। जो पावर बीआई में जब आप फैक्ट वगैरह बनाते हो ना, जैसे फैक्ट मतलब अलग अलग कॉलम्स के साथ जैसे आप टाई अप करते हो डिफरेंट कॉलम्स में, उसमें रहता है वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, इस तरीके से। जैसे मैनी टू मैनी के लिए पावर बीआई में इस तरीके का रहता है। वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, इस तरीके का जो रिलेशन आप क्रिएट करते हो वो तो रहता ही है, तो वो मेन चीज़ है। तो वहां पे ज्यादातर फॉरेन की का काम आता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब चीज का ध्यान रखो। और सीक्वल लिखने से पहले पेपर पे आप वो नोट्स बनाओ, जैसे बॉक्स या लाइन बना के, जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ बॉक्स या लाइन बना के उस चीज को सोचो। जैसे एग्जांपल, जैसे कि कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट, वो कैसे लाइंड अप है। और थ्योरी से ज्यादा लॉजिक पे आप ध्यान दोगे तो वो इजीली शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, इजीली शॉर्ट आउट हो जाएगा, दैट्स द थिंग। आदर्श, ब्रदर, रेज्यूमे में क्या ओनली एक टूल से भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं? शोकेस कर सकते हो, या टूल्स से बनाना होना चाहिए? ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन कौन देगा? देखो, आप कुछ भी प्रोजेक्ट बनाओ ना, कुछ भी प्रोजेक्ट बनाओ, मेक श्योर करो वो या तो एक टूल पे फोकस रहे, या तो हाइब्रिड टूल्स जैसे सीक्वल, पाइथन में फोकस रहे। उस पे प्रॉब्लम नहीं है इंप्रेशन कैसे रहेगा क्या नहीं। इंप्रेशन किस पे पड़ेगा पता है? आपका प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या है, मतलब वो प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या चीज फाइंड आउट किया है, क्या क्या चीज आपने प्रॉपर वे में इस्तेमाल किया। मतलब जो सपोज सपोज आप जो सीक्वल से यूज कर रहे हो कुछ भी फाइंड आउट करने में, वो अगर पाइथन में फाइंड आउट हो जा रहा है इजीली, फिर भी आप प्रोजेक्ट में दिखा रहे हो कि मैंने सीक्वल यूज करके वो डेटा को फाइंड आउट किया, तो मतलब नहीं है। अगर आप कोई भी एक टूल में लेके अच्छे से उस टूल का यूज किए हो, उसको निचोड़े हो अच्छे से उसका पूरा यूज किए हो, तो भी आपका प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। ठीक है, नो डाउट हाइब्रिड प्रोजेक्ट को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलता है, बट हाइब्रिड प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाना आप कि अगर कोई चीज़ सीक्वल से फाइंड आउट हो रहा है, वो पाइथन से फाइंड आउट ना हो, तो समझ में आता है कि हाँ चलो हाइब्रिड प्रोजेक्ट का काम है। ठीक है, दैट्स द थिंग।
अगर एक भी टूल्स के यूज करके आप प्रोजेक्ट बनाते हो और उस टूल का प्रॉपर इस्तेमाल करते हो, मतलब जो यूज करना रहता है, जो भी प्रॉपर यूज रहता है टूल का, अगर उसका पूरा यूज दे रहे हो, तो भाई कोई जरूरत नहीं है दूसरा टूल यूज करने का, लेट मी टेल यू। ठीक। सो दैट इज द थिंग। जैसे एग्जांपल, आपने सीक्वल में कुछ डेटा मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन किया, उसके बाद सीक्वल में तो आप कुछ बीआई रिलेटेड काम नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अब आप क्या करोगे, उसको पावर बीआई से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है। या तो सीक्वल का जितना काम आपने किया है उसको पाइथन के साथ कनेक्ट करके विजुअलाइजेशन बना दोगे, उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू लाइक दैट, यू कैन डू दैट वर्क, वो बेटर रहेगा। ठीक। So, okay, Ajit, we have one query from Ajit. Can you teach how to get clients in freelance? I had created account, but I don't know how to approach. भाई क्लाइंट्स के लिए मैं, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे लिए रेडिट और लिंक्डइन ही काम किया भाई। मेरे लिए रेडिट और लिंक्डइन ही काम किया है। हालांकि इट इज़ बेटर कि आप फ्रीलांस, अपवर्क या तो fiverr.com ये सब चीज़ में जा रहे हो, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत है। जितने जगह पे आप प्रेजेंट रहोगे विथ योर स्किल्स, इट इज़ बेटर। और दूसरा बात यह है कि भाई अप्लाई करते रहो भाई, जस्ट सॉरी अप्लाई बोल रहा हूँ, अप्रोच करते रहो, और कुछ ऑप्शन नहीं है। आप जितना अप्रोच करते रहोगे ना अजित, चांसेस उतना बढ़ेगा कि क्लाइंट आपको हायर करे। जहां आप अप्लाई करना बंद कर दिए, चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जस्ट जैसे कि हम लोग जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करते रहते हैं, वैसे ही सेम थिंग इट इज़ फॉर द क्लाइंट एज वेल। आप अप्लाई करते रहो, कहीं ना कहीं इट विल गेट क्लिक्ड एंड यू विल गेट अ गुड क्लाइंट। ठीक है, दैट्स द थिंग। ठीक। तो एनीबॉडी हैव एनी मोर डाउट्स in the live stream? Any more doubts in the live stream? They can ask your doubts. They can ask your doubts. किसी को कुछ और एडिशनल डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी फ्रॉम अदर्स। ये तो समझ आ जाता है, बट ये समझ नहीं आता कि जैसे किस में डुप्लीकेट होगा और किस में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा टेबल में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, नॉर्मल एग्जांपल समझ जाओ, जैसे आप रिटेल वर्ल्ड का ही ले लो। ठीक है, रिटेल वर्ल्ड का ही ले लो। आप कोई रिटेल एग्जांपल ही ले लो जिसमें कि मैं कुछ कस्टमर एम्प्लॉय ये तरीके का टेबल, आई मीन टू से जितने भी यूनिक एंटिटी रिप्रेजेंट करता है, जितने भी टेबल्स आप देखते हो जिसमें यूनिक एंटिटी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कस्टमर, वो तो यूनिक रहेगा। जैसे आदर्श, आप जैसे हो अभी आदर्श करके दूसरे आदर्श भी होगा कोई, बट वो दोनों तो अलग रहेंगे ना। आप यूनिक हो, वो अलग है, वो यूनिक रहेगा। सो इस तरीके का जहाँ पे डेटा यूज होता है, या तो एम्प्लॉय देख लो, या तो आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बोलो, आप अपना इंस्टाग्राम आईडी देखो, इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, इंस्टाग्राम में एक यूजर नेम एक एंटिटी को मिलता है। सो वन यूजर नेम, वन यूजर गेट वन यूनिक यूजर नेम, एंड यूनिक यूजर नेम मतलब वन यूनिक पर्सन, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो उस जैसे टेबल्स या उस जैसे एंटिटी को प्राइमरी की रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं होता, सिंपल एज दैट। लेकिन बाकी कॉलम्स आप समझ जाओ, बाकी कॉलम जैसे कि आप, जैसे मैंने कहा नेम, मेरा जैसे नाम शुभम है, शुभम बहुत सारे हैं, आदर्श बहुत सारे होंगे, इंडिया में बहुत होंगे, शुभम बहुत होंगे। ठीक है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ में बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा जो मैच कर रहा होगा। ठीक है, सिंपल, दैट्स द थिंग। ये सब चीज में डुप्लीकेट रहता है। और जो टेबल ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप को स्टोर करता है, जैसे कि आपका फीडबैक या सेल्स या तो ऑर्डर्स, उसमें फॉरेन की यूज होता है, और वो डुप्लीकेट हो सकता है क्योंकि एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे, सिंपल। ठीक है।
एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे। सपोज आप देख लो, आप सपोज आदर्श, ठीक है, आपके मल्टीपल फीड, आप ऐप स्टोर में चले जाओ, ठीक है, ऐप स्टोर में आपने इंस्टा डाउनलोड किया, फेसबुक डाउनलोड किया और स्नैपचैट डाउनलोड किया, ठीक है। अब इसमें क्या है बता रहा हूँ, इस पे क्या है, आपका फीडबैक अगर आप दे रहे हो, ठीक है, ये तो प्राइमरी की हो गया क्योंकि आपका वो ईमेल आईडी से जाएगा फीडबैक। अगर जब आप फीडबैक दोगे, इसमें तो डुप्लीकेट होगा, मतलब क्या दिखाएगा गूगल को, गूगल को ये दिखाएगा कि इंस्टा का फीडबैक, स्नैपचैट का फीडबैक, फेसबुक का फीडबैक सब एक ही मेल आईडी से गया है, वन ईमेल आईडी फ्रॉम आदर्स ईमेल आईडी, ठीक है। दैट इज यूनिक, क्यों? क्योंकि आपका मेल आईडी यूनिक है। बट यहाँ पे डुप्लीकेट्स आएगा, कैसे आएगा? सपोज इंस्टा के लिए एक मेल आईडी आ गया आपका सेम, एफबी के लिए सेम मेल आईडी, स्नैपचैट के लिए सेम मेल आईडी, तो जब आप डेटा में देखोगे देखोगे मेल आईडी का डुप्लीकेट्स बन रहा है यहाँ पे। तो ये सब जगह में डुप्लीकेट्स रहेगा और वहां पे फॉरेन की यूज होता है, तो इट इज लाइक कि फॉरेन की में डुप्लीकेट्स का यूज होना, ऑल दोस थिंग्स। तो उस तरीके का एग्जांपल अगर आप लेके सीखोगे रिलेटेड टू डेटा मॉडलिंग, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, मतलब रियल लाइफ रिटेल ले लो या तो आप ऐप स्टोर रिलेटेड ले लो, ये सारे एग्जांपल्स भी आप लेके सीख सकते हो फॉरेन की और प्राइमरी की क्या है। जैसे प्राइमरी की मेल आईडी हो गया, लेकिन जो टेबल में आप फीडबैक वगैरह देते हो, वो जब टेबल जाता है गूगल प्ले स्टोर के टीम के पास, वो क्या देखता है कि उसमें ईमेल आईडी डुप्लीकेट्स हैं, क्योंकि एक कस्टमर के मल्टीपल ऐप इंस्टॉल होंगे और मल्टीपल ऐप के मल्टीपल फीडबैक्स होंगे। सो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम सेइंग। या तो इजी वे, आप तो ये पढ़े ही होगे, प्राइमरी की यूनिक, नो डुप्लीकेट्स, एंड फॉरेन की इज डुप्लीकेट अलाउड। फॉरेन की डुप्लीकेट इज अलाउड। और हमेशा ये पूछना, जब भी आप कोई क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन समझते हो, ये पूछना कि ये चीज एक बार एग्जिस्ट करता है या बार बार एग्जिस्ट करता है। इस तरीके का क्वेश्चन अपने आप से पूछना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक। तो अगर आपका कोई बेसिक या स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, वो आप पूछ सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा उससे रिलेटेड, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड, यू कैन आस्क एंड आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस, राइट। So anybody have any more doubts in the live stream, they can ask your doubts. Anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts in the live stream, I can help you out in that. So anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts.
Anybody have any doubt in the live stream? They can ask your doubts. Anybody have any more doubts in the live stream? They can ask your doubts. Okay, we have one more query from others. Good question, अच्छा क्वेश्चन है. लाइक ये बताओ ब्रदर, मेरे को सीक्वल, एक्सेल एंड बी आई, ठीक है, पी बी आई एक्स लिख देता हूँ बेटर. बी आई कंप्लीट हो गया है, क्या मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूँ या तो पाइथन करूँ? भाई लेट मी टेल यू, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डेटा एनालिस्ट, ठीक है. यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर बी आई डेवलपर, ठीक है. तो डेटा एनालिस्ट और बी आई डेवलपर का कोई भी रोल हो, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो आदर्श. एंड यस, अप्लाई अप्लाई में उतना कुछ इशू नहीं है. जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग एंड साइड बाय साइड पाइथन स्टार्ट करो, ठीक है. पाइथन स्टार्ट करो साइड बाय साइड, ठीक. डेटा एनालिस्ट और बी आई डेवलपर के लिए यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग, नो वरीज फॉर दैट. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. एंड बी आई developer you can start applying and side by side start your python वर्क, ठीक है. साइड बाय साइड अपना पाइथन का पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि अप्लाई करने में दिन में कितना ही टाइम लगेगा, वेरी लेस अमाउंट, ठीक है. हालांकि आपने अच्छा खासा नॉलेज गेन किया हुआ है ये तीनों चीज़ में, तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अप्लाइंग ऑन डी एंड बी आई डेवलपर. क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज विदाउट पाइथन भी लाइक सीक्वल एंड पावर बी आई से डीए लेते हैं. नो डाउट कंपनीज कम है, बट स्टिल कंपनीज आर देयर कि वो हायर करेंगे. और बी आई डेवलपर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पावर बी आई का नॉलेज है, इसीलिए. और सीक्वल और एक्सेल का तो है ही, तो इसलिए बी आई डेवलपर में चांसेस थोड़े ज़्यादा है. नो डाउट डीए के लिए थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि बहुत कम कंपनीज हैं जो विदाउट पाइथन हायर करती है, बट स्टिल अप्लाई करने में क्या जाता है. हालांकि आपके पास ये दोनों चीज़ का नॉलेज है, तो स्टार्ट अप्लाइंग में तो बोलो. ओके ब्रदर, पाइथन करना ज़रूरी है क्या? हाँ भाई, ऑब्वियसली ऑब्वियसली. डी ए, डी ई और डी एस, ये तीनों में एक चीज़ कॉमन है, सीक्वल
और पाइथन, ठीक है। इसलिए तो मैंने कहा आपको यहाँ पे बहुत कम कंपनीज हैं जो एज अ डेटा एनालिस्ट विदाउट पाइथन हायर करती है, ठीक है। बट स्टिल अप्लाई करना स्टार्ट करो। लेकिन आप कोई भी डेटा फील्ड ले लो, डेटा एनालिस्ट या तो डेटा इंजीनियरिंग या तो डेटा साइंस, उसमें सीक्वल और पाइथन इज द कॉमन थिंग। बाकी डेटा इंजीनियरिंग में आपका क्लाउड सर्विस सब स्टार्ट हो जाएगा, डेटा साइंस में मैथ्स सर्विस सब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द थिंग, ठीक। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। पाइथन में लाइब्रेरी, करेक्ट करेक्ट, पाइथन देखो बता रहा हूँ, यू आर राइट थिंग। पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सिंपल सा बात है। पाइथन हम लोग का यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट पे, हम लोग का पाइथन यूज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, और पाइथन यूज़ होता है डेटा वर्क में, ठीक है। इट इज़ बेटर टू राइट डेटा वर्क। डेटा वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है। आपको ये दोनों चीज़ पे उतना फोकस अभी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप डेटा रिलेटेड काम कर रहे हो, आपको अभी इस पे ज़्यादा फोकस रहना है। अब डेटा वर्क में सबसे ज़्यादा काम किस में आता है? इन पाइथन, आई मीन टू से लाइब्रेरीज में। जैसे कि कौन कौन सा? पैंडास में आता है, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सारे जो हैं अपने लाइब्रेरीज, वही लाइब्रेरीज का यूज़ करके आपको डेटा से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है, या तो डेटा मॉडिफाई, मैनिपुलेट, फिल्टर, डेटा फिल्ट्रेशन, जो भी करना है ये लाइब्रेरीज के यूज़ में होगा। तो आपको इन दोनों चीज़ों पे उतना फोकस नहीं करना है क्योंकि आपका डेटा वाला काम है, राइट। तो इट इज़ बेटर कि आप जो लाइब्रेरीज है उसका यूज़ करो और डेटा एनालिटिक्स में लर्निंग फेज में आ जाओ, पाइथन में, आई मीन टू से। और ये इतना टफ नहीं है, लेट मी टेल यू। फंक्शंस, आप एक एक फंक्शंस यूज करके आप पूरा काम निकलवा सकते हो, एक एक फंक्शंस यूज करके, क्योंकि इस लाइब्रेरीज में इतने सारे फंक्शंस है, आपको कोई कुछ ज़्यादा लूप्स या ये सब का यूज करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेट मी टेल यू दैट। तो जितने भी फंक्शंस हैं वो सब आप यूज करके इजीली यू कैन लर्न पाइथन, ठीक। इजीली यू कैन लर्न पाइथन, ठीक है। एंड नाइस, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। तो एनीबॉडी हैव एनी? ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। पाइथन भी यूज होता है ना लाइब्रेरी में? एक्चुअली पाइथन में लाइब्रेरीज यूज होता है, दैट्स द थिंग। आई थिंक आप यही पूछ रहे हो। पाइथन में लाइब्रेरीज यूज होता है फॉर डेटा वर्क, और ये सारा मेन चीजें हैं जिसमें ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। हे हाय, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। सीक्वल प्रोजेक्ट पिन कर दीजिए, हाँ भाई कर देता हूँ, नो वरीज फॉर दैट। आप ले लो यहाँ पे मेरे जो लाइव स्ट्रीम का वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको मिल जाएगा, और मैं आपको यहाँ पे भी भेज देता हूँ, आपको लाइव चैट में ही भेज देता हूँ। ये जो मेरा सीक्वल, आई मीन जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है, इस लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहाँ पे भी सारे आपको, आई मीन टू से लिंक्स मिल जाएंगे, प्लस मैं यहाँ पे भी आपको लिंक्स सेंड कर देता हूँ, ठीक। और बाकी ये अपना टेलीग्राम चैनल भी है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें हो सके तो मैं विल सेंड यू दैट। लिंक्डइन में उतना एक्टिव रहता नहीं, बट स्टिल यू कैन ज्वाइन दैट, ठीक। आपको जितने भी मैंने लिंक्स दिए हैं यहाँ से भी आप लिंक्स पिक कर सकते हो फॉर द प्रोजेक्ट,
और अगर आप चाहो तो जितने भी लिंक्स आपको चाहिए सारे लिंक्स मेरे लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके यू कैन गेट दोज वीडियोस। ठीक है। राइट। So anybody have any more doubts in the live stream? So anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts here. Okay, it's 10:30 right now. I think I have to close my this live stream. And anyways, I am sharing a job post from Blinkit. So anybody if they want, they can apply in this job vacancy. Let me. I have written a post on Blinkit ka data analyst. So anybody wants to apply in that, they can start applying. ठीक है. Anybody wants to apply in Blinkit, they can start applying on this. So anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts.
So, okay, let me close the live stream right now because it's 10:13. Let me write the correct answer. The correct answer is pivot table. Pivot table is the correct answer, and actually this thing is not available in Power BI visuals. Power BI visual. So pivot table is the correct answer, and most of them have given the correct answer, that is 57%. So that's the thing. So okay, anybody have any doubt in the live stream? We will join tomorrow again for that. So thank you everyone for joining the live stream, and let's meet tomorrow again in the new live stream. Till then, bye bye, take care, happy coding, happy learning, and thank you everyone, those who have asked me doubts, and it was really good. Like solving doubts was really good for me on today's live stream. So thank you for that as well. So good night everyone. We will join tomorrow again.